Namaskar and good afternoon to everyone. So now that we have all our esteemed guests with us on board, we are going to start the webinar. To begin the webinar, I would firstly like to express my gratitude to all the esteemed guests who are here and the panel members who are here with us. I'm going to now request my co-founder and CEO, Chakr, to give us the welcome address so that we can start the webinar. Thank you, Aarti. First of all, I would like to begin by thanking all the esteemed guests who have joined us for this event. First of all, thank you, Honorable Minister Sir, Ashwini Kumar Choubey Sir, Honorable Minister of State for Health and Family Welfare for joining us. Dr. Vikas Mahatme, Honorable Member of Parliament from Rajya Sabha, thank you for joining us. Mr. Ajay Chaudhary and Dr. Saurabh Srivastava, thank you for all the mentorship and guidance that you have provided us with. It would have been impossible to reach this stage without your support and guidance. And last but not the least, to the Indian Angel Network family, who has essentially supported us at every step to develop this technology from an idea to finally a product that we are launching on this auspicious day. I would just briefly talk about the motivation. Why are we doing this? And what is the impact that we want to create by this technology? So when we saw that the COVID-19 situation in the country broke out, and we saw the plight of the healthcare workers, that not just in India, but globally, how they were exposed to this deadly virus, and how the basic PPE equipment, etc., was not available. Then, of course, we as a country rise up to the situation, and we ramped up our PPE production. But that also generated a lot of biomedical and hazardous waste, due to which the environment was getting impacted negatively. Taking both of these things into consideration, it motivated us that being engineers from IIT Delhi and coming from a technical background, we wanted to contribute towards helping the country overcome this pandemic. And basically, with that motivation, we have developed this technology that can, one, enable the reuse of N95 masks, which will, one, solve the availability problem, ताकि N95 masks सबको मिले and easily available हो. Secondly, it will solve the biomedical waste problem. तो क्योंकि mask reuse किया जाएगा, तो जो biomedical waste generate हो रहा है, जिसकी वजह से environment is getting impacted, that waste generation will reduce significantly. And last but not the least, of course, the healthcare workers, उनको जो exposure हो रहा था COVID-19 virus, etc., that will reduce significantly. So that was the motivation behind doing something like this. And we are more than happy that we got support from such distinguished people across the country to build this innovation and make it a success. So over to you, Bhati, to take the event forward. Thank you so much, Kushank. I will now request our Director, Sir, Professor V. Ram Gopal Rao, who is the Director and Officiating Chairman for IIT Delhi, to give us the opening remarks. Thank you very much. I would like to congratulate Chakr Innovation and for this for launching this product. I would also like to express my gratitude to Member of Parliament and the Minister of State for being with us here and all the team members. In fact, when they approached us a few months ago, saying that they needed to work on something like this, the decontamination of the PPEs, I felt it's such a great idea, because we are generating a lot of waste now. All of this is bio waste, and with hardly any protocol for disposing them, there is always a challenge of the spread of the virus through a variety of means. So it was a good idea. So we then connected them with the faculty. They started working with various faculty, and now we are able to come up with a technology. I think they are also launching it today. I think this should make a huge difference. Would also like to thank ICMR for proactively coming forward and doing the test and giving them a certificate and allowing them to use that certificate for informing the hospitals and others about the effectiveness of
this technology, I think, which is a great thing. IIT Delhi has also been at the forefront of fighting the COVID. In fact, we have been working on a variety of technologies. On the prevention side, there are multiple IIT Delhi startups now which are in the PPE space. In fact, just in the last 3 weeks alone, I am told IIT Delhi startups have sold something like 1 million PPEs now. That is the kind of a scale at which we are able to address the problem. And also, even on the treatment side, there are lots of studies now from IIT Delhi. Some of them we have already put out for the benefit of public. Ashwagandha, for example, we find through scientific analysis that is very effective for stopping the spread of virus. Even tea is also apparently very effective. And similarly, on the detection technology, we have made a huge progress. We have now the ICMR approved technology. In fact, in the next few days, we will be launching a very low cost RT-PCR at rupees 399. That will be the cost of detection now, which IIT Delhi, another licensee, is going to put out. So I think as an educational institution, our goal is to work on these problems and see how we can provide a solution. As part of it, I think what Chakr has done is indeed very commendable, and I think with all your support, they are able to reach this stage. So I would like to congratulate them and wish them all the best. Thank you so much, sir. We are honored to be a part of the Institute family even after we've graduated. And your support and encouragement for us has always inspired us to do more for the nation. So I would now like to request Dr. Vikas Mahatme, who's the Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha, a renowned eye surgeon, as well as a Padma Shri awardee. So I would like to request you to please address us with the keynote address. थैंक यू। नमस्कार, मेरा आवाज आ रहा है आप सबको? विकास जी, हेलो। हाँ, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कोरोना के कालखंड में देखा आपको? अच्छा, कहाँ? लंबे कालखंड से देखा। हाँ, बराबर। मैं भी आपको देख रहा हूँ, बात हुई थी अपनी 2-3 बार, लेकिन बोला यानी देखना अभी अच्छा हो गया। ये जो प्रोडक्ट है चक्र DeCoV के संबंध में हम आपको देख रहे हैं, और मैं आपका स्वागत भी करना चाहूंगा विजुअल से, फ्लावर्स के। मैंने प्राप्त कर लिया। अच्छा, थैंक यू। मैंने प्राप्त भी कर लिया, बहुत अच्छा लगा। तो हम सबके स्वास्थ्य का ख्याल रखने वाले, और सभी अपना ही नहीं तो सभी भारतवासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने वाले हमारे आदरणीय अश्विनी कुमार चौबे जी, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उन्होंने यानी रिक्वेस्ट पे इसके लिए आने के लिए सहमति दी, इसलिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। वैसे ही आपको पता है बहुत ही सिंपल है सर, और जो भी अच्छा कार्यक्रम हो जनता के लिए उसमें सहयोग उनका हमेशा रहता है। यहाँ उपस्थित IIT दिल्ली के डायरेक्टर वी राम गोपाल, अजय चौधरी जी, अश्विनी जी, AK नांगिया जी, वैसे ही डॉक्टर संजीव प्रसाद जी, और जब PSU की शायद सभी CMD भी आए होंगे। वैसे ही चक्र की जो टीम है पूरी, जिन्होंने ये इनोवेशन किया, जैसे कुशाग्र है, भारती है, तुषार है, और मेनी मोर, ये सब यहाँ पर उपस्थित है। वैसे ICMR के भी लोग जो उपस्थित होंगे उनको भी मैं कहूँगा कि नमस्कार मेरा सबको। और मैं ये बताना चाहूँगा कि कोविड-19 बीमारी से तो ऐसा हुआ है कि हम सब हिल गए हैं, लेकिन हमारे आदरणीय मंत्री जी अश्विनी कुमार चौबे जी, और वैसे ही डॉक्टर हर्षवर्धन जी, और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, इनकी जो स्ट्रैटेजी रही, इससे हम काफी अच्छे से मुकाबला कर पा रहे हैं। ये भी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्ट्रैटेजीज की वजह से अभी भी हमारा जो कंट्रोल है, फैसिलिटीज है, वो हम अच्छे से यूटिलाइज, रिसोर्सेस हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में हमें सबको पता है कि अमेरिका में भी ऐसा हुआ कि रिसोर्सेस की बहुत कमी हुई, और जब हमारी बात हुई अप्रैल महीने की शुरुआत में कि क्या करना चाहिए कोविड में, तो उस वक्त PPE किट्स और मास्क की बहुत ही कमी थी, और हमने सोचा कि यह रीयूज होना चाहिए,
ये रीयूज बहुत ही जरूरी है दोनों के लिए, एक तो एनवायरनमेंट के लिए भी, और दूसरा नंबर ऑफ यूज यदि बढ़ता है महात्मा जी, आपका थोड़ा म्यूट हो गया आपका। हाँ, तो काफी देर से म्यूट है या अभी हुआ था? थोड़ी देर। हाँ, तो ये इसमें कोविड के इसमें हमने सोचा अप्रैल महीने की शुरुआत में कि क्या हम कुछ कर पाए इसके लिए रिसोर्सेस, तब पीपी किट्स और मास्क N95 बहुत कम थे, तो और अमेरिका जैसे देशों में भी ये कठिनाई आई थी कि रिसोर्सेज जो है वो कम महसूस हो रहे थे। तो अपने को तो अपने यहाँ और परेशानी होगी, इसलिए हमने ये सोचा कि इसका रीयूज कैसे करें। पहले ऐसा था कि यूज एंड थ्रो बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छा लगता था कि ये बेस्ट है और इसी को फॉलो करना चाहिए, लेकिन अभी एनवायरनमेंट और रिसोर्सेज की कमी होते हैं, रीयूज एंड रीयूज ये स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो उसके लिए सोचना शुरू हुआ और उसमें फिर चक्र के जो इनोवेटिव लोग हैं कुशाग्र और हमारी बातचीत हुई और हमने सोचा कि कुछ इसमें और क्या कर सकते हैं, और इसी से शुरुआत, वो कंसेप्ट से शुरुआत हुई और आज जो हम बोल रहे हैं चक्र डीकोव, यह प्रोडक्ट तैयार हुआ और 3 महीने में ही ये चक्र इनोवेशन और IIT दिल्ली और बाकी सब टीम ने ये 3 महीने में ही इसको मार्केट में ला पाए अपन, यानी वी कुड हैव अ प्रोडक्ट। ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इनका अविरत कार्य, उन्होंने जो श्रम लिए उसकी वजह से ये हो पाया है। और इसमें मैं कहूँगा कि सभी ने सपोर्ट भी दिया, IIT दिल्ली और वैसे ही ICMR के जो बलराम भार्गव जी है, फिर NIV के श्रीमती प्रिया जी है, इन्होंने भी काफी अच्छे से कोऑपरेट किया और उनके साथ तो हम कोलैबोरेशन में काम कर पाए, तो ये काफी अच्छा हुआ। और NIV एक्रेडिटेड कुछ लैब्स में भी हम रिसर्च कर पाए, तो ये सब की वजह से ये काम आज हम ये दिन देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट लॉन्च कर पा रहे हैं। ये ऐसा एक प्रोडक्ट है, मैं क्योंकि आप देखेंगे कि मार्केट में तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ICMR ने वैलिडेट किया, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये अलोन प्रोडक्ट है इंडिया में कि ICMR ने वैलिडेट किया है, इट इज यूजफुल अगेंस्ट कोरोना, एंड वो तो बाकी इसमें हमने स्टरलाइज भी होते हैं पीपी किट्स एंड N95 मास्क। बाकी मार्केट में यूवी लाइट्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आएंगे, लेकिन वो साइंटिफिकली करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें तो ऐसा हो जाता है कि काफी बार अपने को एक गलत फहमी होती है कि वो उसमें कोरोना वायरस नहीं है अभी, जो प्रोडक्ट्स के बाद यूज के बाद, जैसे अपने उसमें वेजिटेबल्स रखे, मोबाइल रखा, कीज रखे, वो होते नहीं है कोरोना फ्री, लेकिन अपने को लगता है कि हो गया है क्योंकि प्रोडक्ट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स है वो बताते हैं कि दैट इज द एम ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो ये इस तरीके से जो परेशानी है वो इसमें नहीं रहेगी, ICMR वैलिडेटेड है ये। दूसरा ऐसा था कि पर्यावरण के लिए भी ये बहुत अच्छी बात है कि हम यूज एंड रीयूज कर रहे हैं, तो इससे बहुत जो आगे चल के प्लास्टिक और ज्यादा एनवायरनमेंट में जा सकता है वो नहीं जा पाएगा। तीसरा, आपने देखा होगा कि दिल्ली में ऐसा हुआ था कि पिज्जा बॉय से काफी लोगों को कोरोना हो गया, तो मुझे लगता है यही टेक्नोलॉजी हम सभी इसके लिए यूज कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि वेजिटेबल, सब्जी, मोबाइल, कीज, पैसे, banks will be able to use to decontaminate the cash, तो ये सभी जो है इसके लिए भी ये टेक्नोलॉजी यूज में ला पाएंगे, which is approved and validated by ICMR। तो लाइए एक बार और वापर कीजिए बार बार, ऐसा इसका उपयोग होगा ऐसा मुझे लगता है। और वैसे ही अभी
फिर से मैं ये बताने जा रहा हूँ कि प्राइवेटली कुछ हॉस्पिटल्स में हमने इसका स्टडी भी किया, NABH एक्रेडिटेड लैब्स में, जिसमें ये स्टेरिलाइजेशन ऑफ PPE किट्स एंड मास्क भी होता है इससे। और बाकी जो अभी तक के आपने के बारे में बताया, जैसे कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट लाने के लिए हम कहते हैं काफी बार कि हमने सब रिसर्च लाया, कंसेप्ट लाया, लेकिन अनलेस एंड अनटिल यू गेट द फंड्स फॉर इट, इट्स नॉट पॉसिबल टू रियलाइज दिस प्रैक्टिकली। तो इसके लिए काफी लोगों ने मदद की। कोल इंडिया है, मॉइल है, फिर MECL मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, और ऐसे ही काफी लोगों ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और काफी लोगों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन कंट्रीब्यूशन उनका काफी रहा। तो उन सब के मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी वजह से आज ये प्रोडक्ट हम लॉन्च कर पा रहे हैं। खास तौर पर मंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इसके लिए सहमति दर्शाई, और यह एक प्रोडक्ट जो ICMR वैलिडेटेड है। हम PPE किट एंड N95 मास्क रीयूज के लिए एप्लीकेशन से आज से ही शुरू कर पाएंगे, लेकिन इसका एप्लीकेशन और टेक्नोलॉजी का इसको और बढ़ा के बाकी जगह पे इसका यूज हो जाएगा। मैं काफी धन्यवाद दूंगा जहाँ चक्र के कुशाग्र है, भारती है, बाकी सभी है, उन सबको कि मुझे उन्होंने इस अवसर पर आप सबसे बातचीत करने का मौका दिया। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सर आपकी गाइडेंस और सहयोग से ही हम आज यहाँ पहुँच पाए हैं कि हम ये प्रोडक्ट को लॉन्च कर पा रहे हैं। एंड हमें पूरा भरोसा है कि आगे जाते हुए भी जैसे हम इस प्रोडक्ट को आगे ले जाएंगे या ऐसे कई और प्रोडक्ट इजाद करेंगे, तो आपका ब्लेसिंग्स हमारे साथ रहेंगी। थैंक यू सो मच सर। I would now like to invite Honorable Minister of State, Ministry of Health and Family Welfare, Shri Ashwini Kumar Choubey ji. Sir, we are extremely honored to have you here with us. We would like to request you to please address the audience with your speech. आज इस चक्र इनोवेशन के शुभारंभ के शुभ अवसर पर सभी उपस्थित महानुभावों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप सबको नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट रूप से हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विकास महात्मे जी, जो पद्मश्री भी हैं और देश के एक जाने माने मशहूर चिकित्सक है, नेत्र के साथी, हमारे राज्यसभा के साथी हैं MP होने के नाते, और मैं इनके यहाँ गया भी हूँ, नागपुर के वासी हैं। तो मैं उनके आमंत्रण पर ये कार्यक्रम में आज मैं पधारा हूँ। ये ठीक है कि हमारे कुशाग्र श्रीवास्तव और कुमारी भारती सिंगला ने मुझे आकर के आमंत्रित भी किया था और मुझे सारी बातें बताई भी थी। तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि आज के इस कार्यक्रम में पहुंचकर ऐसे युवाओं को, जो देश के कर्णधार के रूप में हैं और एक इनोवेटिव आइडियाज के साथ वो आज हम सब लोगों के सामने साक्षात्कार हो रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। सभी साइंटिस्ट को, जो लोग इस अन्वेषण में लगे हुए थे, उन सब लोगों को हमारी हार्दिक बधाई है। श्री हमारे प्रोफेसर V रामगोपाल राय, जो डायरेक्टर हैं IIT दिल्ली के, प्रोफेसर राव साहब, मिस्टर अजय चौधरी पद्म भूषण, जो फाउंडर है SCL के, उनको भी नमस्कार। प्रोफेसर AK नानगोया, डॉक्टर
सुरंजीन प्रसाद जी और चक्र इनोवेशन के CEO कुशाग्र श्रीवास्तव और CEO MS भारती सिंगला सहित उपस्थित आज के इस वेबिनार के माध्यम से इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रबुद्धजन भाइयों और बहनों, पत्रकार मित्रों, मुझे खुशी है कि आज आप सब लोगों ने इस वैश्विक महामारी के युद्ध में, इस संघर्ष में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और कोरोना मुक्त भारत बनाने के लिए आप सभी संघर्षशील हैं। इस कालखंड में चिकित्सक, चिकित्सा कर्मियों और तमाम स्वास्थ्य कर्मियों का बहुत बड़ा योगदान रह रहा है। मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं। उनके प्रति भगवान उन्हें दीर्घायु बनाए रखे। ये कोरोना योद्धा के रूप में जिस प्रकार से लोगों ने इस संघर्ष में साथ दिया है, मुझे लगता है इतिहास इसको कदापि भूल नहीं सकता। एक इतिहास रचने का काम किया है। ये ठीक है कि वैश्विक महामारी पूरे विश्व में जिस प्रकार से फैला है और इससे तबाह हो चुके हैं। चीन से ये प्रारंभ हुआ और उसके बाद धीरे धीरे देश के दुनिया के कई हिस्सों में ऐसे बहुत बड़े बड़े साम्राज्यवादी देश, अमेरिका जैसे देश भी आज इससे बहुत ही प्रताड़ित है। हम जानते हैं कि कोरोना के इस महामारी में जो पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि कोविड-19 का जो यह कालखंड है, ये भारत के सांस्कृतिक अध्याय में निश्चित रूप से एक हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी विपदा हमारी संस्कृति या सृष्टि को समाप्त करने का एक इस तरह से आक्रमण सचमुच में हमारे लिए चुनौती है। लेकिन भारत पुरातन है। भारत की सांस्कृतिक जो विरासत है ये 1-2 वर्षों का नहीं है, करोड़ों वर्षों का हमारा विरासत है। और इसको कोई इस प्रकार के वायरस से हमारा भारत समाप्त हो जाएगा, हमारी संस्कृति समाप्त हो जाएगी, ऐसा समझना भूल होगा। लेकिन जिस प्रकार से ये चीन के अंदर इसको छिपाए रखा गया, पहले बाद में इसका प्रकट हुआ और आपने देखा कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही भारत में जैसे ही इसकी जानकारी हुई, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दूरदृष्टि का परिचय देते हुए और तुरंत देशवासियों को सावधान किया और स्वास्थ्य मंत्रालय को उन्होंने निर्देशित किया, बैठक करके हम सब लोगों को लगातार मार्गदर्शन देते रहे और उनके ही मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार पिछले जनवरी माह से हम कार्यरत हैं। देश के सभी राज्यों को हम लगातार एडवाइजरी भी भेज रहे हैं। सभी राज्यों के साथ हमारी जो संघीय ढांचा है उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हम लोगों ने पेश किया है। प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से एक बार नहीं 6-7 बार उन्होंने उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस कालखंड में बातचीत भी किया, उनसे परामर्श भी किया, विपक्ष के नेताओं से भी परामर्श किया और हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से लगातार हम लोगों ने जारी किया अपनी एडवाइजरी के अलावा उनके साथ उनकी समस्याओं को जाना, उनसे रूबरू हुए। स्वास्थ्य मंत्री से लगातार, राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री से लगातार हम लोगों की अभी तक बातचीत होती रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्टेट वाइज भी हम लोग उनकी समीक्षा करते रहे और फिर जो भी समस्या का समाधान हो सकता है
उसको हम लोगों ने ढूंढ निकाला। इतना ही नहीं, हमारे जितने भी इस प्रकार के इस कालखंड में हम कह सकते हैं कि रात दिन हमारे सभी चिकित्सकगण, स्वास्थ्य कर्मी और लगातार इस कालखंड में साथ देते रहे, आगे बढ़ करके अपने मनोबल को ऊंचा बना करके और देशवासियों को पूरे संकल्पबद्ध तरीके से इन सब लोगों ने साथ दिया है। इसलिए प्रथम पंक्ति में मैं वैसे चिकित्सक और चिकित्सा कर्मियों को बार बार बधाई देता हूँ। आप सबको यह भी मालूम होगा कि जिस समय जनवरी के बाद ये पूरा बढ़ते गया, विदेशों में बहुत ज्यादा था, भारत के अंदर बाद के दिनों में केरल में कुछ पहुंचा। केरल प्रांत के लोगों ने काफी संयमित रूप से और बड़े ही सुयोग्य ढंग से उन्होंने इस पर फतह करने का काम किया और आज केरल की स्थिति सभी राज्यों से लगभग हम कह सकते हैं कि अच्छी स्थिति में केरल है। वहाँ जिस प्रकार से लोगों ने अनुशासित रूप से इसका आत्ममंथन भी किया और जिस प्रकार से उन्होंने अवेयरनेस करके लोगों को जगा करके स्वच्छता के प्रति हो या सावधानी बरतने का यह काम भली भांति कई राज्यों में हो रहा है। देश के लोगों ने इसको अपनाया है। प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश में लगातार लॉकडाउन के समय भी लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 और फिर अनलॉक 1, 2 में हम आज गुजर रहे हैं। तो जहां जान प्यारा है, अब जान से जहान तक, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा हमें जान भी प्यारा है और जान से हम जहान तक जाएंगे। तो हम अपना अकेले जान के लिए नहीं, समाज के लिए भी हम तो अपने को भी सुरक्षित रखना, अपने परिवार को सुरक्षित रखना और अपने समाज और देश को सुरक्षित रखना, ये हम सब लोगों का पुनीत कर्तव्य हो जाता है। और आपने देखा कि इस कालखंड में कितने अच्छे अच्छे आइडियाज हुए, कितने अच्छे अच्छे लोगों ने, हजारों लोगों ने पत्र लिख करके मंत्रालय को भी, प्रधानमंत्री जी को भी अपने अपने आइडियाज से उनको जानकारी दिया। छोटे बच्चों ने भी दिया, युवाओं ने दिया और हर वर्ग, हर जाति के, हर प्रकार के लोगों ने अपने ऐसे अच्छे अन्वेषक आइडिया को समाज के सामने लाने का काम किया। चाहे वो आज हम देख रहे हैं कि हमारे ये युवा जो IIT से पढ़ाई समाप्त करके और इन लोगों ने किस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों से ये लगे रहे, जहां इन्होंने पर्यावरण पर भी काफी काम किया है। जनरेटर से जो प्रदूषण फैलता है उसका भी इन्होंने संयंत्र बना करके और देशवासियों को सुपुर्द किया। प्रधानमंत्री जी ने इनके इस इनोवेटिव आइडियाज को निश्चित रूप से पर्यावरण मंत्री तत्कालीन डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इन सब लोगों ने इनको प्रोत्साहित किया और कई संस्थाओं ने इनको मदद भी की। मुझे जिस प्रकार से इन्होंने बताया है, मुझे लग रहा है कि ये युवा भारत के जो युवा कर्णधार हैं, ये देश के लिए हमारे, हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए एसेट्स है, बहुत बड़ा एसेट्स है। आज जिस प्रकार से देश इस वैश्विक महामारी से गुजर रहा है, आपको जान करके अच्छा आश्चर्य होगा कि पहले दौर में लोग, जनवरी के महीने में लोग कहते थे कि भाई एक भी यहाँ टेस्ट लैब नहीं है, केवल एक पूना में टेस्ट लैब था जहां 200-400 टेस्ट एक दिन में हो रहा था और हम लोगों ने 2-4-5 दिन के अंदर ही 15 लैब स्थापित कर दिया। और आज आपको जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि हमने लगभग 1132 लैब्स हमने स्थापित किया, जिसमें 835 वो गवर्नमेंट का है और लगभग 334 प्राइवेट का है। और प्रतिदिन ऐसे ट्रूनेट मशीन जो भारत में ही टीबी के लिए चिन्हित करने के लिए आविष्कृत हुआ था, आज ट्रूनेट मशीन भी
हमने गांव-गांव में, जिले में उसके द्वारा टेस्टिंग का काम हम कर रहे हैं। आरटीपीसीआर का मशीन, जो काफी बड़े पैमाने पर आरटीपीसीआर जांच इस देश में प्रारंभ हो करके आज जहां हम 100-200 जांच करते थे प्रतिदिन, आज हमारी कैपेसिटी 3 लाख प्रतिदिन का हो गया। हम 3 लाख प्रतिदिन जांच करने की कैपेसिटी आज हमारे पास में है। और आपको यह जानकर के भी अच्छा लगेगा कि हमने अभी कुछ दिन पहले ही दुनिया के कई देशों से हमने अच्छा प्रदर्शन किया है। और अभी कुछ दिन पहले 1 करोड़ हम पार कर चुके थे टेस्टिंग, और आज 1,10,62,411 टेस्टिंग हमने किया है। ये हमारे प्रातःकाल का जो हमारे पास में जो डैशबोर्ड है, तो हमने ये पार करने का काम किया है। और अभी हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी, जैसा कि कहा कि प्रतिदिन बढ़ रहा है, 3,20,000 अभी प्रतिदिन कैपेसिटी हो गया। आप सोच सकते हैं, जहां डॉक्टर साहब 100 था, आज 3,20,000 प्रतिदिन हमारी कैपेसिटी बढ़ गई। और 24 घंटे, इसलिए 24 घंटे में 2,83,659 टेस्ट हमने देश भर में किया है। ये भारत की बहुत बड़ी महानता है। हमारे आईसीएमआर के लोगों ने, हमारे चिकित्सकों ने, जिस प्रकार से हमारे साइंटिस्ट, इन सब लोगों ने जो अनूठा प्रयोग किया है, हम उन सबको और बहुत ही ईश्वर से कहते हैं कि उन्हें शक्ति प्रदान करें। ये ठीक है कि आज कोविड की महामारी भारत में थोड़ी बढ़ी है। कुछ राज्यों को मिला लें तो देश का 80% महामारी ऐसे 5 राज्यों में, खास करके चाहे वो मुंबई महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, आपका तमिलनाडु हो या गुजरात हो, ऐसे 5-7 जिले राज्य जो है उसमें कुछ महामारी ज्यादा बढ़ी है। और फिर इधर के 5-7 दिनों में जो कई प्रवासी मजदूर भाई गए, तो वहां पहले काफी प्रखर रूप से बढ़ा था, बीच में बंद हो गया था, लेकिन इधर फिर देख रहा हूं बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी संख्या धीरे धीरे पुनः बढ़ रही है। लेकिन हमारे लिए इसके चेतावनी जरूर है, लेकिन इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हमने इसकी पूरी अच्छी तरह से व्यवस्था करने का प्रयास किया है। और अपने जीवन को, प्रधानमंत्री जी बार बार ये संदेश दे रहे हैं कि अपने जीवन को अब कोरोना के साथ हमें जीवन जीने का अभ्यास करना है। कोरोना को मुक्त करना, पहले ही फेज में जहां प्रधानमंत्री जी ने ताली और थाली भी बजवाई चिकित्सक और चिकित्सा कर्मियों के लिए, दीप जला करके एक अच्छा संदेश दिया, आत्मदीपो भव, लोगों को अपनी आत्मा से हम आत्मदीपो भव का संकल्प लिया। और आपने देखा कि आत्मदीपो भव से आत्मनिर्भर अभियान, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री जी ने संदेश देने का काम किया लॉकडाउन के अंतिम फेज में, और 20 लाख करोड़ का पैकेज ये देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाने का, जो भारत का लघु उद्योग से लेकर के और तमाम ऐसे देश के अंदर जो विभिन्न प्रकार के हमारे कार्य चल रहे हैं उसके विकास के लिए। और निश्चित रूप से हमने कोरोना के कालखंड में इसके विरुद्ध जंग लड़ रहे थे और लड़ रहे हैं। जहां तक आपको मालूम होगा कि उस समय पीपी किट्स या N95 मास्क ये विदेश से हम मंगाते थे, और उस समय जब हवाई जहाज बंद हो गया, यहाँ तक कि मुझे याद है हम लोग तो रोज 24 घंटा हमारा कार्यालय लगातार कार्यरत था। हम लोग दिन में, रात में 2 बजे 3 बजे रात तक भी और चीजों को निपटाने में लगे रहते थे। देश के राज्यों से बातचीत करते रहते थे हमारे मंत्री, हम सभी लोग, और हम अपना संदेश भी राज्यों को देते थे, राज्यों से लेते थे, और उनको अपनी पूरी टीम भी भेजने का लगभग 4-5 बार पूरे देश में एनसीडीसी की जो टीम है, डॉक्टरों की, ऐसे लोगों की टीम
हमने देश के सभी राज्यों में लगभग भेजने का काम किया, उनको सहयोग करने का काम किया। जहां हमने पहले फेज में प्रधानमंत्री जी ने 15,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रालय को देने का काम किया। हमने पहले फेज में 4100 करोड़, 4100 करोड़ और उसके पहले एनएचएम में जो राशि थी, हमने देश के लोगों को कहा कि आप अपने एनएचएम से उसको खर्च करिए, हम उसकी पूर्ति करेंगे। और पहले फेज में अप्रैल महीने में हमने 4100 करोड़ रुपए देश के सभी राज्यों को भेजने का काम किया। और उसके अलावा जब हमारी यहाँ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही थी, आज लगभग 20 मीटिंग हमारी हो चुकी है। हम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में जब डिस्कस कर रहे थे कि भाई स्टीमर फंसा हुआ है, विदेश से जो आ रहा था अंतरराष्ट्रीय, और कैसे अब हम लोग N95 मास्क चिकित्सकों को अगर नहीं देंगे, हमारा अगर पीपी किट्स नहीं जाएगा पूरा, तो किस प्रकार से लोग कैसे इसका सामना करेंगे। लेकिन देखिए प्रधानमंत्री जी ने जो ठाना, लोगों को विश्वास हुआ, उन्होंने 2014 में स्वच्छता अभियान के साथ साथ इस देश के अंदर गरीबों के प्रति समर्पित सरकार के रूप में एक संकल्प लिया कि हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित हो। और देश को पहली बार उन्होंने स्वच्छता अभियान के साथ साथ जहां मेक इन इंडिया की बात कही, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और डिजिटल इंडिया तक हम भारत को आगे ले जाने का उन्होंने संकल्प लिया था। आज वो संकल्प हमें देखने को मिल रहा है। आज इस पूरे कोविड के कालखंड में हम लोग जहां मेक इन इंडिया को हमने बल दिया, वही आज डिजिटल इंडिया का भरपूर उपयोग हम लोग, सभी राजनीतिक दल, सभी सामाजिक, सभी उद्योग क्षेत्र के लोग आज वेबिनार कर रहे हैं। आज हम कह सकते हैं कि लोग ऑडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज देश और दुनिया से हम इस डिजिटल इंडिया से काफी वाकिफ हुए और इससे इसको काफी बढ़ाया। और उसी प्रकार से हमने हमारे मंत्रालय के सहयोग से टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा पहले मुश्किल से 6-7 लोगों को तैयार किया, ये फरवरी में। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि वो 6-7 से बढ़ते बढ़ते आज 700 लगभग अच्छे पीपी किट्स बनाने वाले 700 ऐसे उद्योग खड़े हो गए। ऐसे तो 1100 से भी ज्यादा संख्या में पीपी किट्स बनाने वाले देश में है, लेकिन 700 अच्छे क्वालिटी का, जिनका भारत सरकार ने और हमारे चाहे वो विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा या सिट्रा के द्वारा अप्रूव्ड ऐसी संस्थाएं हमारे साथ रजिस्टर्ड हुई। जहां एक भी किट्स नहीं तैयार करता था भारत, आज प्रतिदिन 4 लाख किट्स भारत में तैयार हो रहा है हमारे लोगों के, अच्छे किट्स, अच्छे क्वालिटी। उसी प्रकार से N95 मास्क आज भी विदेशों से आ रहा है। यहाँ 1 दर्जन से ज्यादा लोग उसमें हमारे उद्योग धंधे में लगे हुए हैं और बहुत सारे लोग पंक्ति में, वेटिंग लिस्ट में 50 से भी ज्यादा लोगों ने N95 मास्क बनाने का काम शुरू कर दिया है। वो उनको रजिस्ट्रेशन हो रहा है और उसके बाद उनकी मान्यता अब जल्दी ही मिल जाएगी। तो हमने सबसे पहले अपने मंत्रालय को भी कहा कि भाई इसको अंतरराष्ट्रीय बाजार में, दुनिया में भारत सबसे अच्छे क्वालिटी का दूसरा स्थान होगा, जो अच्छे क्वालिटी का पीपी किट्स और N95 मास्क भी आने वाले दिनों में, इसका एक अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की ख्याति सुप्रसिद्ध होगा। कई देशों से N95 मास्क का डिमांड बढ़ गया है। अभी हमारा एक्सपोर्ट बंद है, लेकिन भारत सरकार उस पर गंभीरता से बात कर रही है। भाई और बहनों, आज के इस कालखंड में जैसा कि मैंने कहा कि कोरोना वायरस के कारण व्यवसाय भी हमारे काफी प्रभावित हुए, जिसकी वजह से बड़े बड़े उद्योग भी अपने व्यापार का जो न्यू नॉर्मल के लिए ढालने पर मजबूर है। रिटेल सेक्टर की कई कंपनियां
अपने व्यवसाय ऑनलाइन ले जा रही है। कई कंपनियों ने होम डिलीवरी की जरूरत को समझते हुए अपने व्यवसाय बदल दिए। तो कई नामी कंपनियों ने मास्क और पीपी बनाना शुरू कर दिया, जैसा कि मैंने पहले ही कहा। इन बदलावों से कई संभावनाओं को भी जन्म दिया है। जहां हमारे लिए ये अभिशाप है, कोविड हमारे लिए, पूरे विश्व के लिए अभिशाप है, वहीं कुछ मायने में वरदान भी हुआ है। हमें सोचने का अवसर दिया, हमें समझने का अवसर दिया। पर्यावरण और प्रकृति का संतुलन भी हमने देखा कि इस कोविड के लॉकडाउन में प्राकृतिक पर्यावरण के संकट को भी झेलने का हमने हिम्मत किया। आज जंगलों से शेर सड़कों पर हाथी टहलने को देखने को मिला। जमुना और गंगा की नदी की पवित्रता को भी हमने लॉकडाउन में देखा है। तो निश्चित रूप से एक तरफ ये अभिशाप है तो दूसरी तरफ वरदान भी है। अब आपको जानकर अच्छा लगेगा कि हम इस कालखंड में हमने जो, हमारी सरकार ने जो लॉकडाउन में तैयारी किया, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे अंदर हम लोग चेतावनी को स्वीकार करते रहे। अभी भी हमारे पास हॉस्पिटल्स उतने डेडिकेटेड नहीं थे। हमने देश भर में, आपको जानकर अच्छा लगेगा कि देश भर में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल 1216, ये पूरा डेडिकेटेड मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल सरकारी। उसी प्रकार से जो टोटल डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर हमने बनाया वो लगभग 2703 और प्रतिदिन बढ़ रहा है। अभी कुल मिलाकर के बेड्स की जो संख्या है 5 लाख से भी ज्यादा हमने बेड्स की संख्या किया, जिसमें 32 से 33 हजार आईसीयू और उसी प्रकार से हमारे जो ऑक्सीजन सपोर्टेड जो 51,321 ऐसे बेड्स हमने तैयार किया है। ये पूरे देश भर में ये वक्त हमको मिला। हमने इस वक्त का पूरे राज्यों के साथ बातचीत करके और राज्य सरकार को जो भी सहयोग होना चाहिए वह सहयोग हमने भरपूर किया है। ये सरकारी ब्यौरा में दे रहा हूं। और आपको जानकर यह भी अच्छा लगेगा कि पूरे कालखंड में टोटल कोविड केयर सेंटर जो है वो 9,909 हमने तैयार किया, जिसमें लगभग 9 लाख बेड्स है, यानी कि आइसोलेशन बेड्स। और कोचेज भी, रेलवे का कोचेज को भी हमने तैयार किया, जिसमें 4 लाख बेड्स आज रेलवे कोचेज में, रेल और स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से। हिंदुस्तान के अंदर शायद दुनिया में एक पहला उदाहरण होगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। देश की जनता 135 करोड़ लोगों ने संकल्प लिया कि हम देश को आगे बढ़ाएंगे, एक विकसित भारत बनाएंगे, हम ऐसे महामारी को मुक्त करेंगे। और ऐसे महामारी से लड़ने का हमारा जो संकल्प है आज काफी हद तक पूरा हुआ है, इसमें कई दो मत नहीं। जहां तक आपकी जानकारी के लिए, आप सभी जानते हैं ये हमारे लिए चुनौती जरूर है, लेकिन हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमने पूरी तैयारी किया है। आज जहां तक देश में हमारे जो आईसीयू है वो आईसीयू पर 41,302 लोग आईसीयू में हैं। उसी प्रकार से वेंटिलेटर पर 10,823 लोग हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर पर 45,327 लोग हैं। यानी कुल 5% से भी कम लोग कोविड से शिकार होने के बावजूद, अगर हमारे देश के अंदर आज पॉजिटिव केस 7,93,802 है, तो हमारे अच्छे रिकवरी का 4,95,513 ये रिकवरी हुआ। और हमारा रिकवरी रेट आज लगभग 62.5% यानी 63% की ओर बढ़ रहे हैं। ये हमारा रिकवरी रेट है। और उसके अंदर ही फेर्टिलिटी रेट जो है, हमारा मृत्यु दर, वो 2.72% है। उसमें कोमॉर्बिडिटी पेशेंट भी है, कैंसर से, डायबिटिक से, ऐसे हार्ट या लंग्स या श्वसन में जिनको तकलीफ है, ऐसे भी मरीज है। हमारा मृत्यु दर कम हुआ, जो भी हुआ है उसके लिए हमें कष्ट भी है।
हमें दुख है कि हमारे कुछ भाई इस कोविड के कालखंड में गुजरे। कई डॉक्टर, कई बड़े अच्छे चिकित्सक, कई स्वास्थ्य कर्मी जिन्होंने जान की बाजी लगा करके सेवा किया, और वो आज हमारे बीच नहीं रहे। और कई योद्धा, डॉक्टर और ऐसे कई लोग, उन्होंने लड़ाई लड़के, और कई लोगों ने कोविड से लड़ाई लड़के और कोविड योद्धा बनकर के प्रखर रूप से आगे आए और अपना लाइन लगा दिया प्लाज्मा रक्त देने का, कि हमारा प्लाज्मा डोनेशन के लिए। और जो लोग कोविड से ठीक हुए आज जगह जगह वो अपना रक्तदान करने के लिए खड़े हो रहे हैं। ये हमारे देश की एकता और अखंडता का एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण। भाई और बहनों, आप सबको मालूम होना चाहिए कि हमने आज के इस कालखंड में 5%, 80%, 85% लगभग लोग एसिम्प्टोमेटिक केसेस होते हैं। डॉक्टर साहब आप लोग ज्यादा जानते हो। और 10-15% लोग ही हमारे भारत में जिस प्रकार का वायरस है, वो 10-15% ही लोग माइल्ड जिसको कह सकते हैं उसके शिकार होते हैं। बुखार हो गया, ये हो, काफी दर्द हो गया, सर दर्द हो गया। और 5% या 5% से कम लोग आज 2.53% जो आईसीयू में है, 0.41% वेंटिलेटर पर है, और उसी प्रकार से 2.97% ऑक्सीजन पर है। ये 5-6% का रेशियो, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। तो ये हमारा है, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। जहां देश में केवल पूरे देश में कहा जाए वेंटिलेटर की संख्या बहुत कम थी, प्रधानमंत्री जी ने अपने कोविड जो फंड है, जो जनता ने खुल करके दान दिया, उस कोविड केयर फंड से हमने 2000 करोड़ रुपए का पहले वेंटिलेटर, अभी देश भर में 21,000 वेंटिलेटर्स हमें भेजने, जिसमें लगभग 13,000 वेंटिलेटर हमने भेजने का काम किया है। और भी जितनी भी मांगे आएगी। और हमारे यहाँ के लोगों ने खासियत यह है कि वेंटिलेटर हम विदेशों से मंगाते थे, अब स्वदेशी वेंटिलेटर्स भी तैयार हो रहा। ये ठीक है कि बहुत कठिन परिश्रम करके लोग कर रहे हैं, कुछ कमियां भी है, कुछ त्रुटि भी है, हिम्मत किया है लोगों ने, और आज वेंटिलेटर देश में बनना शुरू हो गया। बहुत बड़ी बात है। वही मुझे लग रहा था कि जब लोग ये कहते थे कि भाई पीपी किट्स कहां से आएगा, बनेगा नहीं, बहुत लोगों ने इस पर शोध किया, और शोध करने के बाद पीपी किट्स जहां ओजोन के द्वारा, उसके पहले हमने देखा कि रेज के द्वारा भी डीआरडीओ वगैरह ने वह भी तैयार किया है, जो वायरस है उस पीपी किट्स को दूर कर सकता है। और मैंने चक्र का भी पूरा, ये तो कहते हैं ना कि मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ने का काम अर्जुन ने किया था। आज शायद उसी चक्र को तोड़ने का काम हमारे नौजवानों ने किया है। मैं बहुत दाद देता हूं कि आपने जिस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से इस चक्रव्यूह को तोड़ने का काम किया है। महाभारत कालखंड में हमने उस चक्रव्यूह को हमने देखा है कि किस प्रकार से अभिमन्यु ने मां के गर्भ में ही वो ट्रेनिंग लिया, और उसी प्रकार से इस कोविड के गर्भगृह में, इस कोविड के कालखंड में आपने अभिमन्यु के तरह इस चक्रव्यूह को तोड़ करके ये चक्र आपने उपस्थित करने का काम किया, इसलिए आपने इसका नाम चक्र रखा है। मैं ऐसा समझता हूं ये चक्र जो सर्किल जो है, मुझे लगता है कि हमारे ये दोनों और उनके साथ जो सहयोगी हैं, प्राध्यापक और कुछ छात्र, ऐसे लोग जिन्होंने सहयोग किया है, बहुत काबिले तारीफ है। और मैं बार बार कुशाग्र को, आपकी कुशाग्र बुद्धि है और कुमारी भारती, ये दोनों ने विशेष रूप से अपना योगदान दिया है, और महात्मा जी का आशीर्वाद महात्मा जी अच्छे गाइड करते रहे तो ये आगे बढ़ रहे हैं। और हम भी इनको, मैंने वचन दिया है कि जिस तरह की जरूरत आपको महसूस हो, आपके इस प्रयोग में अच्छे प्रयोग कैसे हो सकता है। आईसीएमआर में आपका वैलिडेशन हुआ, हमने आईसीएमआर के लोगों से भी बातचीत किया, उन्होंने भी आपके इस आईसीएमआर के लोग अगर जुड़े होंगे, उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि नहीं, बहुत अच्छी तैयारी करके कर रहे हैं।
तो आपने जहां प्रथम फेज में आज N95 मास्क को ओजोन के द्वारा, और आपने, मुझे पहले शंका था कि ओजोन का पहला दिन जब ये मिलने आए, जब ये चले गए, तो मुझे कुछ शंका रह गई बाद में। मैंने कहा कि भाई ओजोन तो बड़ा खराब देश है, अगर थोड़ा सा भी कहीं लीक कर गया तो इससे तो बड़े बड़े कैंसर की बीमारी होती है और भी कई महामारी हो सकता है। तो एक महामारी को समाप्त करने के लिए, एक वायरस को समाप्त करने के लिए कहीं दूसरा चीज ना खड़ा हो जाए। मेरे सामने ये चक्र को पूछने के लिए तो मैंने अपने जो हमारे एपीएस है उसको कहा कि जरा बात करो भाई, उसके लिए कुछ किया है कि नहीं किया है। तो जिस प्रकार से उन्होंने समझाया कि नहीं, सारी व्यवस्था इन्होंने किया कि कहीं भी ओजोन का एक कोई बूंद भी बाहर नहीं आएगा और उससे कोई खतरा नहीं होगा। और जो मशीन इन्होंने बनाया, यह भी पता चला कि पुणे के अंदर 400 एकड़ 400 प्रतिदिन 400 शायद एक महीने में 400 मशीन बनाने की इनकी क्षमता 400 से 500 है। और ईस्ट इंडिया, इधर पूर्वी भारत में भी ये कुछ चीजों को खड़ा करने का इन्होंने सोचा है। ये ठीक है, ये तो साइंटिस्ट है, इनको काम करना है, अन्वेषण है, ये उद्योगपति नहीं बन सकते। ये ठीक है कि इनके पास बुद्धि है, लेकिन मार्केटिंग करना तो और किसी को होगा। तो इनके लिए जो जो भी जरूरत होगा हम सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं, ताकि ये नौजवान हमारे आगे बढ़े। हमारे वैज्ञानिक जो है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, जय जवान जय किसान हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, और जय विज्ञान हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री पूर्व रहे हुए ऐसे देश के बड़े नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान को कहा। और हमारे आज के भारत के प्रधानमंत्री जय जवान जय किसान जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान को जोड़ा, शोध को जोड़ा। यह सबसे बड़ी बात है। और आपने देखा कि शोध के कारण जहां आरटीपीसीआर, डॉक्टर साहब, मुझे याद है पहला दिन जब कोविड का 5-7 दिन हुआ था तो बिहार से हमें खबर आई, आपसे भी मेरी बात हुई थी, आपने कहा कि आप प्रयोगशाला नहीं है नागपुर में। हाँ सही सर। और मैंने कहा भाई देखो, जल्दी जल्दी खड़ा करो, इमारत को जल्दी बनाओ, विश्वकर्मा की तरह रात दिन काम करके बनाओ। लेकिन हमारे आईसीएमआर के साइंटिस्ट ने, हमारे वैज्ञानिकों ने रात दिन परिश्रम करके आरटीपीसीआर का, आपको कहा मैंने, क्या लगभग 1150 लगभग रोज बढ़ रहे हैं, ऐसे काम खड़ा किया। हमारे जो टीबी की जांच के लिए मशीन बनी थी, उसने भी कहा कि हम किट्स तैयार करेंगे, जैसा कि कहा गोवा का वो। और उन्होंने अपना ट्रूनेट मशीन, सीबीनेट जो विदेश का अमेरिका से आया था टीबी जांच के लिए, उसने भी ये आरटीपीसीआर के जैसा काम जांच करने का वो करना शुरू किया। आज हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जगह जगह भेज रहे हैं, हमारे लिए वरदान बन करके आया। और आपकी जानकारी के लिए आरटीपीसीआर का किट्स विदेशों से आता था, लेकिन आज पहली बार हिंदुस्तान के अंदर, आज से 1.5 महीना पहले जो टेंडर हुआ, उसमें भारत के ही उद्योगपति आरटीपीसीआर का किट्स जो पहले 1100 रुपये में मिलता था, उसको 365 रुपये में उन्होंने तैयार करके देने का काम किया। यह है भारत के उद्योगपतियों का और भारत के लोगों का मनोबल। ये जो इनोवेटिव आइडियाज है, ये आइडियाज मामूली बात नहीं है। लोगों ने चिंतन किया, परिश्रम किया, हर लोगों को जोड़ने का काम किया, और इस प्रकार का काम श्रृंखलाबद्ध खड़ा हो रहा है। मुझे लग रहा है कि आज इस संभावना को हम, इस संभावना के अहम हिस्सा कई छोटे उद्योगों और स्टार्टअप का है, जो भारत को कोरोना वायरस से बचाने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो हमारा अभियान है, वो कई नई तकनीकों को हम जन्म दे रहे हैं। ऐसे तकनीकी विस्तार कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि वेंटिलेटर, कई रैपिड किट्स, आज एंटीजन टेस्ट ये भी शुरू हुआ है। हमने दिल्ली में उसका भरपूर प्रयोग कर रहे हैं, कई राज्यों में लोग उसका प्रयोग करना शुरू कर दिए। और पहले एक कंपनी एंटीजन का था, अब लगभग 1 दर्जन कंपनी एंटीजन का, जिसका वैलिडेशन के लिए कतार लगी हुई है। जल्दी आजकल में वो ठीक हो जाएंगे। तो यह भी काम शुरू हुआ है। मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से
प्रधानमंत्री जी ने भारत सरकार के साथ साथ कई संस्थाओं ने इन स्टार्टअप को आर्थिक सहायता भी प्रदान की है, वो काबिल तारीफ है। और प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन वो चैलेंज की शुरुआत की है, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके जरिए भारत के युवा वर्ग का हमें आत्म मुक्त भारत बनाने में अहम योगदान होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। मुझे इस बात से अवगत कराया गया है कि इसी कड़ी में IIT दिल्ली से जो पढ़े लोग हैं, चक्र इनोवेशन के इस फाउंडर्स ने प्रोफेसर के साथ, मित्रों के साथ इतनी बड़ी एक नई तकनीकी का खोज करने का काम किया है। हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। इनका ये कदम बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ए लाल जुग जुग जियो, जुग जुग जियो मेरे लाल, ऐसे अच्छे काम करते हुए भारत माता का गौरव बढ़ाते रहो। इदम नोमम इदम राष्ट्राय स्वाहा, मैं कुछ भी नहीं, जो भी है वो राष्ट्र के लिए समर्पित है। तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चांद, परम वैभवन में तुम्हें तत्सराष्ट्रम समर्था भवत्वा साथे विषम। ये भारत माता तुम परम वैभव के शिखर पर पहुंचो, यही अंतिम तमन्ना हम देशवासियों का है। आइए ऐसे कठिन समय में हमारे स्वास्थ्य कर्मियों एवं पर्यावरण को बचाने के लिए ओजोन आधारित मास्क शुद्धिकरण तकनीक जो आपने बनाने वाली चक्र इनोवेशन की इस टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आग्रह करता हूं कि इसके बारे में हम सभी को विस्तार से समाज को भी इसका जानकारी दें। और निश्चित रूप से पहला फेज ये है, दूसरा पीपी किट्स का भी है। ये दौर अभी चलने वाला है, तो जो महंगा पीपी किट्स होता है, और मुझे जानकारी हुई कि 10 बार इसको हम ओजोन से वायरस फ्री कर सकते हैं, कोरोना वायरस को फ्री कर सकते हैं। और उतना ही नहीं, इसके कपड़े को भी जो फैब्रिक्स है वह भी 99% ठीक रहेगा। 10 बार ठीक होने के बावजूद, 20 बार कोरोना वायरस हटने के बाद कपड़े पर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं होने वाला। तो ये मास्क को भी अच्छी तरह आप बना रहे हैं और आप पीपी किट्स को भी बनाएंगे, जिससे जगह जगह मैं देखता हूं कि गार्डन में जाइए, सड़कों पर जाइए, फेंके रहते हैं पीपी किट्स। आपको खास करके मास्क, तो कम से कम उन मास्क को अब तो धीरे धीरे कहा जाए कि कुछ जगह जगह पर लोग ऐसे मास्क को इकट्ठा करके और उससे वायरस समाप्त करने का काम भी करेंगे। आपके इस मशीन के द्वारा ओजोन युक्त मशीन कामयाब होगा, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। ये भारत है, ये भारत है। पूरे विश्व के अंदर भारत का डंका आज पूरी दुनिया में 135 करोड़ का हमारे भारत के प्रधानमंत्री का जिस प्रकार से हमने दुनिया के तमाम देशों को, चाहे वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टेबलेट आपने देखा कि करोड़ों की मात्रा में अपने लिए भी और पूरी दुनिया के 125 देशों को हमने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टेबलेट भेजने का काम किया। ये वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, उसका उदाहरण भारत ने पेश किया है। भाई और बहनों, आज के इस मौके पर मैं बहुत आप सबको बधाई देते हुए और विशेष करके हमारे जो MP साहब यहाँ सामने महात्मे जी हैं, ये तो परमात्मा का काम करते हैं। हमको भी इन्होंने बराबर जोड़े रखा, बराबर हमको जानकारी देते रहे और इस अच्छे आइडिया से आपने हमें अवगत कराया। और मैं इन दोनों नौजवानों को बहुत बधाई देता हूँ और इनकी पूरी टीम को, जिन लोगों ने भी सहयोग किया, इनके गुरुदेव जो प्रोफेसर, जो IIT के डायरेक्टर हैं, उन सब लोगों का कि आपने इतने अच्छे बच्चे तैयार किए हैं। देश के ऐसे होनहार युवक देश के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। आप सबको नमस्कार। 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 बहुत अच्छा रहा। चलिए, आप अच्छे हैं तो हम सब अच्छे हैं। बहुत अच्छा आपने
सबको मोटिवेट किया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। हमारे नौजवानों ने मोटिवेट कर दिया अच्छा चीज दे करके, अच्छा चीज परोसा है। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। आप हमारे साथ पहले भी थे, अभी भी है। मैं नौजवानों से कह रहा हूँ, आप आगे बढ़ो, हम लोग आपके साथ हैं। धन्यवाद सर, आपके शब्दों ने हमें बहुत इंस्पायर किया है और इस प्रोत्साहन को हम आगे लेके जरूर कोशिश करेंगे कि इस प्रोडक्ट के जरिए हम जितना देश के लिए योगदान दे सकते हैं और जितना देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं बना पाए। सर, अब मेरी आपसे गुजारिश है कि पुणे में हमारी जो टीम है, वहाँ पे हमारा इक्विपमेंट है, तो हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि आप वर्चुअली उसका उद्घाटन करें। हम चाहते हैं कि आप उसका वहाँ पे फीता काटते, बट क्योंकि हम ये वर्चुअली कर रहे हैं तो हम आपसे अनुमति चाहते हैं कि हम ये डिवाइस को पुणे में इनॉग्रेट कर पाए। निश्चित रूप से इसका विधिवत शुभारंभ मैं आशीर्वाद दे करके कर रहा हूँ। भाई काटो, नारियल फोड़ो तो अच्छा बढ़िया है, हम लोग तो जोड़ना जानते हैं, काटना नहीं। बहुत बढ़िया। चक्र DeCoV, ये चक्र DeCoV का आज शुभारंभ हो गया। हाँ, बहुत बढ़िया। ये देश के लिए वरदान सिद्ध होगा, दुनिया के लिए वरदान सिद्ध होगा। आपके शब्दों से तो बहुत एनर्जी मिल गई सर। धन्यवाद। चक्र DeCoV का दिया। धन्यवाद सर। सर, अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारी टीम से तुषार बाथम हैं पुणे से, जो हमें टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे काम करता है। थैंक यू सर, धन्यवाद आपके शब्दों के लिए, ये जरूर हमें बहुत प्रोत्साहित करेगा। जैसे कि आपने कहा कि सर ये चक्र इनोवेशन ने चक्र DeCoV मशीन बनाई है, ये पेटेंट पेंडिंग मशीन है और हमने ये इनोवेटिव सिस्टम बनाया है ICMR NIV के साथ टेस्ट करके। तो बेसिकली अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको एक छोटी सी डेमो दिखाऊंगा ये मशीन चलती कैसे है। तो अगर हम इसमें देखें तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रे है जिसमें हमने मास्क ऐड किए हैं। अब इस मास्क को हम इसमें लोड करते हैं तो इसमें ऑलमोस्ट आराम से 50 मार्क्स आ सकते हैं। एक बार जैसे ही हमने इसे बंद किया, फिर उसके बाद हम अपनी मशीन स्टार्ट करते हैं। इसमें हम अपना आईडी नंबर और हम इसमें तुषार आपका म्यूट है, माइक म्यूट है तुषार। मैं फिर से करके सर दिखाता हूँ। जैसे ही हमने यहाँ पे अभी आप जैसे देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, अपनी आईडी और उसका ऑपरेटर का नाम डाला और हमने स्टार्ट बटन दबाया, तो ये मशीन खुद चेक करती है कि दरवाजा आपका सही से बंद है या नहीं। एक बार अगर ये बंद है, ओके करते ही साइकिल शुरू हो जाती है। जैसे आप देख रहे हैं साइकिल में सबसे पहले हम वैक्यूम बनाते हैं, वैक्यूम डीप वैक्यूम बनाते हैं। इससे फायदा हो होता है वैक्यूम बनने से जो इसमें स्टर्लेट है, जो कि ओजोन है, वो बहुत ही तेजी से फैल पाता है और हर जगह घुस पाता है। एक बार जब वैक्यूम बन गई, इसके अंदर ओजोन बनाई जाती है इंटरनली, कहीं से अलग से ओजोन हमें डालनी नहीं पड़ती। और फिर जैसे मैंने बताया कि हमने इसको टेस्ट किया है ICMR NIV से, उसी हिसाब से हम इसमें डोजेज देते हैं ओजोन की, ताकि जो भी अंदर कोरोना वायरस हो या वेजिटेटिव बैक्टीरिया हो, सारे 99.999% किलो है। एक बार जब ये डोजेज हो गई, उसके बाद हमने इसमें एक कैटलिस्ट लगाया है जो कि हमने NCL पुणे की मदद से बनाया है। ये कैटलिस्ट इस ओजोन को बहुत ही जल्द तरीके से रिड्यूस कर देता है वापस ऑक्सीजन में, ताकि अगर आप ये जब बाहर निकले तो किसी को भी इससे दिक्कत ना हो। तो इसी के अंदर ओजोन बनी और इसी के अंदर से हमने इसको खत्म करके ऑक्सीजन बना दिया। एक बार जब ये ऑक्सीजन बन जाता है और सेंसर बताता है कि ओजोन का लेवल सेफ हो चुका है एज पर ओशा, उसके बाद एरेशन साइकिल शुरू होती है। ये भी ऑटोमेटिक साइकिल है जिसमें हम साफ हवा अंदर लेते हैं एक HEPA फिल्टर के थ्रू, जो कि हॉस्पिटल ग्रेड HEPA फिल्टर है, और उसके बाद उसी हवा को अंदर से रेसिड्यू निकाल के फिर से बाहर फेंकते हैं अगेन एक HEPA फिल्टर के थ्रू। इस तरह हम ये इंश्योर कर पाते हैं कि कोई भी एक्सीडेंटल कंटामिनेशन ना हो इस सिस्टम से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है, वन टच सिस्टम है,
और इसके अंदर जो हमने कंप्यूटर लगाया है वो ये सारी चीजें स्टोर करके रखता है ताकि आप ट्रेस कर पाए कि अगर कोई दिक्कत हुई हो तो क्या दिक्कत हुई थी या साइकिल में कोई दिक्कत आई थी। और इसी के साथ आपके रिकॉर्ड्स के लिए यहाँ पे प्रिंटर भी लगा हुआ है जो कि साइकिल की एक एक चीज पूरी प्रिंट करता है और आप इसको रिकॉर्ड में रख सकते हैं अपने आगे के ऑडिट के लिए या ये देखने के लिए कि साइकिल में कोई दिक्कत आई थी और उस वजह से कोई संक्रमण हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत यूजर फ्रेंडली और सिंपल सिस्टम बनाया है और इसमें सेफ्टी का खास ध्यान रखा गया। जैसे मंत्री जी आपने कहा कि सेफ्टी ओजोन की एक बहुत बड़ी जरूरत है, तो हमने इसमें एक ओजोन सेंसर भी लगाया हुआ है एक्सेल, जो कि अगर ओजोन जैसे ही ज्यादा जाती है प्रमाणित मात्रा के ऊपर जो कि सेफ है ह्यूमन के लिए, वैसे ही वो इवैक्यूएशन साइकिल शुरू कर देगा, तो कैटलिस्ट से रिड्यूस करके वो इवैक्यूएट कर देगा और एरर दे देगा, ताकि ये ना हो कि कोई भी ऑपरेटर या कोई भी हॉस्पिटल में किसी को भी कोई दिक्कत आए ओजोन के लीकेज होने से। तो ओवरऑल ये सिस्टम हमने जो बनाया है ये काफी यूजर फ्रेंडली बनाया है और हैंडी बनाया है और ये एक टाइम पे जैसे मैंने कहा 50 मास्क हैंडल कर सकता है। तो इसी के साथ वी होप दैट वी विल बी एबल टू हेल्प आवर कोरोना वॉरियर्स व्हाइल मेंटेनिंग अ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। थैंक यू। ओवर टू यू Vikas. Thank you so much, Tushar. Honorable Minister, sir, now with your permission, we would like to start our panel discussion. So today we are also honored to have 5 very renowned panelists with us who would like to speak on this topic and share their views with us. Along with that, we also have our mentor and advisor, Mr. Ajay Chaudhary, who has agreed to moderate this panel. I will start with introducing our moderator, and then I will request him to introduce the panelists. So, Mr. Ajay Chaudhary, he is a Padma Bhushan awardee, founder of HCL, and also the chairman of the IIT Naya Raipur. I would like to request Mr. Ajay Chaudhary, sir, now to allow us to begin the panel discussion. Namaskar. India's per capita emissions are among the lowest in the world, but we are also the 3rd largest population emissions. So air pollution is a major issue in India, and to take care of this, Chakra earlier worked on creating a product that could reduce emissions from generators. Last few years, the government has launched Swachh Bharat. और स्वच्छ भारत के साथ शुरू करते करते एक बहुत बड़ा कैंपेन मोदी जी ने शुरू करवाया था, आदरणीय मोदी जी ने, और उसमें उन्होंने बोला था कि सिंगल यूज प्लास्टिक को रिमूव करना चाहिए, और वो एक बहुत बढ़िया सक्सेसफुल कैंपेन रहा. अभी इंडिया जनरेट्स 26,000 tons of plastic, so that is our problem. So now with COVID, PPEs are creating a huge solution as well as a huge problem, and the problem is that it's finally leading to plastic waste. So to address this problem and its solutions, we have a power-packed panel to discuss this. So I would like to introduce the panel first. Dr. Shailja Vidya Gupta is the Senior Advisor to the Office of the Principal Scientific Advisor to Government of India. She had worked earlier with Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology, where she was handling international collaborations. She's also responsible for DBT's collaborations with non-government organizations like Wellcome Trust, Bill and Melinda Gates Foundation, etc. Mr. Dilip Chenoy is the Director General of FICCI, very well-known personality. He actually headed NSDC earlier. Dr. Arunabh Ghosh is a public policy professional, advisor, author, columnist, and an institutional builder. He is the founder, CEO of the Council on Energy, Environment, and Water. Mr. Pavan Chaudhary is the Director General of Medical Technology Association of India, and is also a TV talk show host. And he has published many bestsellers like How a Good Person Can Really Win. And finally, Times of India once rated him as amongst the foremost thinkers of India.
And then I would like to introduce Dr. Suranjin Prasad Palipamala of Japiego. Japiego is an international non-profit organization affiliated with Johns Hopkins University. And he has done phenomenal work in business development and planning for health in the country. And he's also been associated with one of the NGOs that I work with, Population Foundation of India. So with that, I would like to start with some of the questions for the panels. Since Dr. Anurag Ghosh has to go off early, I am going to request him to answer two questions. The first question is, if we were to divide the movement towards sustainability and against pollution into pre-COVID and post-COVID, what has changed according to you? Thank you, Mr. Chaudhary, and Namaskar, Honorable Minister. Thank you for your very inspiring remarks. And of course, congratulations to Chakr Innovation for this product. I have been aware of their work for about now more than 2 years since they started working on trying to reduce particulate matter from diesel gensets. And this, of course, is innovation in which is, in a time of need. To answer your question very directly, I see there's only one word that defines my answer, which is risk. Pre-COVID, we treated climatic, public health, or environmental kind of challenges as things that come and go, that relevant line ministries might respond, a few innovators here and there might respond when it comes, but it is not something the rest of us need to concern ourselves with. Post-COVID, it has become pretty evident that planetary level shocks have a risk that damages the entire economy, our entire system of governance, our system of living, our system of interaction. So to me, innovation now has to focus on what I call tail end risks. Tail end risks, by definition, have low probability, but have very high impact. Even through the pandemic, we've talked about bending the curve, flattening the curve, but we don't talk about what is at the end of the curve, which is the severity of the risk which hits certain vulnerable parts, maybe of the country, or vulnerable parts of the population. For instance, in this case, the aged or the health workers. So this is a risk focus has to be absolutely at the core of India becoming much more resilient against planetary scale shocks. Great, thank you so much. As a public policy expert, what are some major challenges do you foresee for India in meeting its sustainable development goals while still battling COVID? And what would be your recommendations to deal with that? Thank you. As it happens, I'm also a member. I'm the only Indian who serves as a member of the UN's Committee for Development Policy. And it's our job to look at the progress on sustainable development goals across the world. And I was just presenting to the high-level political forum at the UN yesterday. Here is the challenge before India and many other developing countries. Thanks to COVID, we are looking at globally, maybe about 400 million people going back into poverty. Oh. We're also looking at a severe challenge on jobs. In India alone, which has the largest number of young people, which is our demographic dividend, also suffered a loss of about 27 million jobs in a single month. We are also looking at the challenge of where new growth and investment will come in, especially when companies are struggling with keeping their working capital going. And other issues such as water, water was always an important sustainable development goal. Now with the question of hand washing and better sanitation becomes even more important. And finally, the critical issue of climate risks, which I was mentioning earlier. Now, here is the challenge, Mr. Chaudhary and esteemed members of the panel. The pandemic is a horrible humanitarian crisis,
but it is also an acute crisis. Those of you who are medical professionals would know the difference between acute and chronic. The acute crisis deserves our attention right now. The chronic crisis deserves our attention through the rest of our lives. The chronic crisis is of us as humans, as a species, pushing the boundaries, what are called planetary boundaries, whether it is the nitrogen balance, whether it is the carbon cycle, whether it is water, whether it is nutrients in the soil. And these will then impact how our agriculture functions, what kind of jobs we get, where our investments get at risk, and so forth. So it is this holistic approach that we need in trying to address SDGs and make sure that progress that has been made on SDGs, and India has made significant progress on many of those goals, does not backslide. Hence, what do we need to do? I believe we need a new social contract in India on jobs, growth, and sustainability. And how will we deliver that social contract? It will happen by investing or focusing on the very sectors that can make ourselves more resilient, that can drive in more investment, and also have high employment coefficients. Distributed water and sanitation infrastructure, distributed energy infrastructure. In our rural areas, which are now coping with millions of migrants who have come back, using distributed energy can create, does have a market potential of more than $50 billion, 3.7 lakh crore on farm and off farm activities. Rooftop solar on our hospitals, in our clinics, can create 7 times more jobs per unit of electricity generated than utility scale solar. 600 crore alone can solarize all primary health centers in the country, which means that they will have the electricity there to be able to store the vaccines when it gets developed. So once we begin to think of this so-called impossible trinity of jobs, growth, and sustainability not being impossible, we realize that coming out of the pandemic, we can still have progress towards the SDGs, make India more Atmanirbhar, and make sure that innovators like Chakra Innovation truly get the chance to showcase their mindsets, their skill sets, and also commercialize their products in India and abroad. Thank you so much. Thank you. I know you have to go somewhere, so you can sort of go ahead. If you could stay here for a little while, it'd be great. I'll try to stay for a few more minutes, and then. But thank you very much for indulging me and for inviting me for this. Yeah. Dr. Shailja Gupta, there is a growing concern that soon our oceans will have more masks than jellyfish. And since you have become popular as India's mask lady, we would like to know your views around this. And how do you think we can prevent it from happening and adopt more sustainable practice? Good afternoon, everyone, and thank you for having me here. Congratulations, Chakra, for this innovation which allows the reuse of N95 masks. When we brought out the guidelines for homemade masks, one of the primary concern was how do we allow our densely populated people living in densely populated areas protect themselves from the disease spread. And even then we started we issued the guidelines in March. Even then we knew that the aerosol spread was the most dangerous spread for COVID. And now I see people being a little more relaxed about their masks, and that should not be allowed. We have to use masks, especially when we talk, we should use our masks, except when we are staying, we are all by ourselves in our rooms. We are allowed to use talk without our masks. But even then, during that time, in the guidelines, we had said that the surgical masks, these N95 masks cannot be used by the common population. We have to make them use homemade masks, which are environmentally friendly, which can be washed and reused.
in our guidelines, we had specified the ways of washing, safely washing them and safely reusing them, and to use cotton fabric, which is biodegradable, as you all know. The increase in plastic waste, so to speak, because of the COVID crisis is something which all of us need to be very, very concerned about. We had recent articles in the newspapers where people were being cremated, and people who cremated the people left their PPEs at the cremation ground, and there was huge pile up of PPEs being left at the cremation grounds. We see non-medical workers using PPEs, masks, gloves, very commonly. They are being used in the airports, in the by barbers, by food business, and in the and now increasingly it will be in the malls as well, as the lockdown eases, and the waste will be humongous of a quantity we have not even fathomed. So it is important right now that we have solutions for reuse and recycling of these plastic waste. The best thing about this plastic waste, it is a high energy source. And if we can find a solution of incinerating the plastic waste, the PPE, the masks, and generating energy out of the same, and having standalone units, I think that will be a wonderful solution of reusing and them and generating energy from waste, so to speak. And these standalone units can be dustbins, come incinerators, put across marketplaces, crematoriums, malls, even housing societies. With that, the Office of the PSA has issued a call for innovators, asking them whether they can come up with these standalone units which can treat these PPs. We cannot unless it is a specific and a very specialized solution of the Chakra solution, where it is used to reuse it. The ones which are thrown away randomly, we cannot just assume they are safely thrown away. We do not know whether they've been thrown away by a patient or an asymptomatic person or a person who's safe, but we have no clue about that. So can we pick that up, put it into a dustbin, which is an incinerator, and create an environment which gets rid of the plastic, it generates energy and uses that energy to work that incinerator. So the call has been very successful. It still is open. It will close on the 15th, and we have great response from that. So I'm hopeful that people are already thinking of the enormous environmental stress, the the COVID-related protection systems are putting on the earth. And while we say COVID has also cleaned the earth, but humans find a way of negating everything which the environment does. So yes, we have a huge problem on our hands. Very right, absolutely right. Next, maybe now I'd like to move to Pawan Chaudhary. And Pawan, what would be your recommendations to startups who are now new to the medical technology space like Chakra? And how can healthcare sector adopt more sustainable practices when the usage and disposal is at an all-time high? So my first recommendation to any startup or even a large company is: sales is vanity, profits is sanity, and collections is reality. By this, I mean that staying in the healthcare sector, you can do a lot of good,
But first you have to do well, because if your boat is sinking, you cannot save other drowning people. If your utensil is itself empty, how you will feed others? So first is sales is vanity, profits is sanity, and collections is reality. And the second point which I would like to suggest to startups in medical technology sector is that they should have two teams. One is a team of scientists and the other is a team of entrepreneurs. So maybe some people don both hats. For example, Ajay, you don both hats beautifully. But scientists should look after the electromechanical side, the software, the hardware, the algorithm. And the entrepreneur team should further be divided into those people who can guide you in the medical technology domain, which is an intricate domain and which has lot of, I would say, lot of nodes where it interacts with other domains. It interacts, for example, with defense also. Medical products which are there in your body can be hacked. So if a pacemaker is hacked, it can give all those people who are wearing that kind of pacemaker a shock, or it can discharge their battery. And similarly, several other sectors. Secondly, the need identifying, designing, regulatory piece should be done by these people. Thereafter, the marketing also has many nuances which require domain-specific knowledge, which is where you require a person with medical technology side experience. And the other kind of experience is somebody like you. So a person who can cross-fertilize, who can be a door opener, who can bring in funds, who can overcome obstacles. And when these two type of people come together, then you have the right team in medical technology. So somebody like you and maybe somebody like me, and this is not a sales pitch, we are both very busy, and our whatever time we could allot to startups has already been consumed. But what I am saying basically is, खुशबुओं को फैलने का शौक है मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर. सो अजय चौधरी जी जैसी हवाओं से रिश्ता जरूरी है, तभी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस उठ सकते हैं. And last point is, for a product like this, which is the first of its kind in the world, it can bring huge fortunes. And if it does, then do remember that the history of this healthcare sector does not come from business. It comes from service. As you know, the oldest hospitals which were there were perhaps there in countries like India, where these hospitals were made as a charity by the rich people of the city to provide free service to everybody. So once you are there, once you have done well, do good also. So Kushagra, Bharti and Arpit, this is my appeal to you. Once you have done well, do good also. Thank you. Very, very interesting input. Dr. Prasad, let me come to you. Sir, I would just like to interject. I'm really sorry, but I'm just interjecting in between. So Minister Sir has to leave now. So we would all just like to thank Honorable Minister Sir for joining us. So your words have truly, truly inspired us to do well. So, thank you very much, sir. Dhanyawad, sir. So, Dr. Prasad, due to mobility restrictions, majority of the countries are now focusing on localized supply, production, and development. Do you think it will affect international funding and collaboration on scaling clean technologies, like the transition to electric? Thank you, Mr. Chaudhary, and thanks
to Chakra for inviting me to this launch, and congratulations on getting this. Yes, at this moment, there is a need for innovations, and any innovations, especially being done by startups, definitely needs funding, and funding is the fuel to anything what we do. What we are seeing is the international funding is not a monolith. It's there are certain fundings that are meant for like a social good, like meant to actually help indigenize and give India the needed sustainability. These funds will continue to remain. There would be funds which would come in from promoters who are promoting a certain product. Those may be restrictive, but I don't think the present funding thing will change. But definitely, because as my earlier colleague Dr. Ghosh mentioned, the economy is shrinking, and because of that, you may have some funding constraints because of the shrinking economy. But if you're looking at the type of funders and the type of people, I don't think there's going to be much change. In fact, these are opportunities for growth, just like Mr. Ghosh said, and especially in the health sector, we are actually looking for growth. The health sector is actually now going to be one of the major engines for growth. There's vaccines, there is drugs, there is PPEs, and many process innovations that are taking place on actually getting to do things. So if you're looking from that angle, the angle of growth, and you're looking at that sweet spot, yes, and I'm sure where we have a whiff of business, funds would funds and capital would come in. Definitely there has been a nationalistic every country has been hit so hard that there has been a nationalistic thing going on, including USA, not supporting WHO, not supporting things, but I'm sure businesses will go beyond that. Okay, thank you. That's very encouraging. Dilip, how are industries responding to issues related to sustainability and reducing pollution while battling COVID? So thank you, Mr. Chaudhary, and it is great to listen to all the earlier participants. So three things have actually happened in this space for industry. The first is that because of the COVID situation, a lot of them had to move from just in time to just in case. So it actually created a system where people were looking at maintaining supply chains, maintaining production, ensuring distribution, ensuring sales. And what actually happened was that the number of SKUs in many different entities actually reduced. They had to optimize on packaging, they have to optimize on delivery, they had to really look at getting rid of everything extra that went beyond the product, right? You would actually notice it if you were getting even any delivery through any of the e-commerce companies. So by the nature, just like, it's neither the CEO or the CTO or the CIO who has actually forced the digitization of the company, it is COVID that is driving the digitization in companies. Similarly, COVID has actually been driving immense amount of sustainability across all types of companies, first. The second thing is that a major issue in regard to, let's say, pollution, etc., was our traveling to and fro work. Now, like DTH, WFH has become a new acronym. It is going to find new ways of sustainably doing things from outside home. And therefore, all the attendant added carbon footprints or even sustainability issues, whether it is disposable things in factories or waste in factories or waste in workplaces, all that is also being actually contained. And the third thing is that since
a lot of inputs are very difficult to get and supply chains are getting leaner. The whole supply chain is actually learning to do more with less. So, even if there is a greater focus, because now you are saying that, I don't want too many moving parts in the system. In addition, I want alternate parts in the system, and I need to actually look at how to make the business go forward. It's applicable across agriculture, services, and manufacturing. So I think this is forcing a lot of people to look at issues there and looking at sustainable issues. And I think the challenge would be that, if it's back to business as usual, then, how do you give incentives and how do you create an ecosystem that this process continues? But the impact on the bottom line of most companies will be the most rewarding factor for companies to actually pursue this thing going forward. So very interestingly, we are seeing the good and the bad of COVID. Yeah. Okay, Dr. Shalja Gupta, another question that I'd like to ask you. With the occurrence of COVID, there has been a shift in focus towards R&D. According to you, what would be the areas for technological developments where startups should focus now? This actually is a very interesting question. And when we looked at the COVID experience, and you heard it, you heard the minister say, you heard the panelists also say, the whole country sort of came together and met the challenge, the crisis of COVID, by whether it was in producing PPEs, ventilators, diagnostic test kits. We just came together, and what we normally would take a year or a 2-year or a 3-year period, we managed to compress that time and get it done within 2 months and 3 months. So the capacity to innovate and do things well lies within the country. No doubts about that. It is just the attitude which was missing. So when we talk about science and technology being drivers of an economic growth of a country, what do we mean? We mean that science and technology are providing solutions to the problems of the country. And given those tools are created by these scientists, there is an economic impact by the scientists. And the COVID crisis, during the COVID crisis, we saw that all the scientists, all the technologists could come together and create an impact, which if you look at PPE from a position of non-existent PPEs within India, we are not only fully, we are in a position of surplus PPEs, and we can actually export some PPEs. And given that, I see a huge potential unfold in front of us. We realize there is a potential within the science and technology community when they can meet the challenge of a crisis. If you look at historically, if you look at the World War II, the whole industrial revolution emerged because of the crisis created by the World War II, and all the developed countries sort of reinvented and reorganized themselves, and we saw the whole industrial revolution unfold in front of us. I think I agree with Mr. Dilip, that this is an opportunity, and we see that we can get things done, and we can have healthcare, of course, will be a priority, for whatever reasons, when we have realized that we have the capacity within us to go from zero to a surplus situation. I think defining priorities will not be anymore the prerogative of a government officer. It will be taken over by the citizen, and he will decide that this is what I will, or she will decide, this is what I need to bring to the market, and this is what the market needs, and I know I can do it, given the rusty government systems. The government system can also match the ambitions and the aspirations of our youth,
goes without that. Goes without saying. I agree there is subcritical regulatory processes. I agree there is subcritical systems, governance structures within our own government, but the demand also has been subcritical from the industry side. Once the demand goes, we become more demanding of the system. The system will have no choice but to meet those demands and pull up their socks and reinvent themselves. So I think this crisis has been unfortunate for a lot of things, but it has also been fortunate for a country like India to wake us up. It's like a wake-up call, and we have responded to it well. And I think we are going to do better things in the future, just because we have realized we are capable of better things. Thank you. I think what I've observed in the last 4 or 5 months is the close working between government, academia, research, and startups and business. And I think this kind of situation has never happened before. And I would definitely like to see it continue forever, because that's really what this country really needs. Where we all need to work together and make this happen. It's been an exhilarating. I agree, absolutely. Also. Yes. The academia realized they could work with the industry. The industry realized they could work with the academia. Just these 3 months, the CSR funds, CSR, the corporate social responsibility funds, which came into from industry to the research organization, has been immense. And if Dr. Gopal Rao is there, he will tell you how many funds, CSR funds came in to IIT Delhi itself, are quite amazing. And this is within a span of 2 to 3 months. And yes, there is a huge hope and scope for. That's correct. It's been absolutely amazing. Yes. Pawan, I'd like to ask one more question from you. How do pandemics impact demand for medical technology? And will this pandemic lead to a mushrooming of startups in this space in India? A very interesting question. Pandemics impact medical technology in a very big manner. Whatever is the scientific understanding at that time. For example, when the Black Death and other plagues came a couple of centuries ago, the miasma theory, which was a dubious theory, but that was the prevalent theory, that all these diseases come because of noxious vapors which come up from the soil. And this led to huge millions of kilometers of pavement making through flagstones and concrete. The idea was, it was a sanitarian logic of that time, that we will seal in these noxious vapors within the earth itself. So this was then. Then came the rat. Now the scientists came to know it's the rat in bubonic plague, which is the culprit. So lot of innovation and enterprise happened around the rat. There were committees of engineers sitting in every city to rat-proof the city. Thousands of patents were filed in 1910s and 1920s for drain pipe design, threshold design, and so on. That was the medical technology of that time. Similarly, cholera brought in the sewage system. That was medical technology of that time. Then as understanding happened, grew, during the 1918 plague, it was the mask which came up. Then open air treatment which came up, and so on. Then the respirators came up. So medical technology really gives a very big, gets a very big fillip after every pandemic. And this pandemic also is also going to make this sector boom, if history is any guide. The other reason why this sector will boom is because of our leadership. Our Prime Minister
is today perhaps one of the few prime ministers of the world, or perhaps the only one, who understands medical technology sector. This sector is a sector which is shrouded in mystery. Today, for example, my house help also understands that ventilator is not the space over the door, but a machine which gives life to the COVID patient. But before this, medical technology was veiled. This sector has unveiled it for his colleagues also, for the entrepreneur also, and for the funder also. So I feel that this pandemic is going to push this sector in a big way. And I hope that with that push, India will come to the forefront of the contenders in this space, thanks also to our Prime Minister's vision, which was there already about this sector. We had the chance of witnessing the depth of his vision firsthand, and I hope that will become a reality in times to come. Thank you. Thank you. Dilip, like regular FMCG goods and commodities, masks are now becoming part of our daily lives. They used to be part of daily lives of the Japanese for a long, long time. And of course, in addition, a major component of our waste. Do you think the concept of extended producer responsibility could be applied here for waste management strategy? Yeah, thank you, Mr. Choudhary, for that. But, I just want to take off from where Pawan left, and we'll come to this. So, in the medical technology field, the mantra was direct to hospital, the DTH there. Then, with telemedicine, it has actually come to direct to home, right? And I think the next thing is going to be direct to hand. So individuals are going to actually see this because, and with the wearables and all of that. So I see that the whole concept of medical devices and all is going to be changing as we go forward. And this, when you have many more devices, micro devices, smaller devices, different things in the ecosystem and multiplying, then the question comes of how do we actually look and deal with end of life problems, So it could be electronic waste, what we talk in one sense, or it could be kind of any other waste that you talk of. So it's not necessarily the producer responsibility actually came in with respect to plastic waste. Now, can that as a concept be extended to other sectors? Actually, it is there in the case of some electronic items also. And, soon, hopefully with the recycling policy in the auto sector, it will actually come up, right? Here, there are two models in the sense that who's responsible, right? If I were to take the auto sector as an example, in one case, it is the responsibility of the company. In the other case, it is the responsibility of the individual. And I think one thing that the COVID crisis has actually taught us is that the individual is in the core of containment, of recycling, reuse, etc. Whether it is, segregating garbage for collection of the garbage kind of a thing. So the entire, and then the whole ecosystem actually works. And, it is very interesting. If you look at what Prime Minister said, if I remember, this was April 2018, he talked about that all stakeholders need to address the three golden principles of reduce, recycle, and reuse. For example, for addressing waste management and sustainable development issues. Now, it is for the whole ecosystem to come in. Because if I, as an individual, don't dispose of my mask or my PPE or my thing, in an appropriate manner, in a responsible manner, then putting any onus on the producer to be able to, to do that will not actually work in the given set of circumstances. So, in the overall context, we need a new normal. Like COVID is a new normal, business is a new normal. We need a new normal in addressing the issues of waste identification, waste collection, waste recycling, waste reuse. The technology here is a reuse technology, right?
Whereas the earlier thing which Arunabha also mentioned and which I also had met, I think Kushagra and Bharati, they sat in the very room where I'm actually speaking from now, about how do you capture carbon particles and then reuse them in a different context. So I think this whole thing would actually create a whole ecosystem of startups, of logistics providers, of users, and just putting it on the producer may not solve the problem, because given that India is a diverse country and the experiences that we are seeing from the plastic waste management rules, where different states are doing different set of rules, different sectors are actually doing this, we need to develop a new normal and a new framework going forward. But the fundamental point is we have to identify things that will I think you asked in the previous question, will mass dominate the ocean floor like plastics, right? So we should not let that happen. Okay? We need proper methods of disposable, proper ecosystems for doing it, and it's possible. Like we heard Dr. Gupta talking about this great academic industry collaboration in this space. So if we put our minds to it and if we all work together, it's easy to solve the problem going forward. But we need a solution, and we need a combined solution. But I think as individuals, we have to be part of the solution and do our bit. Otherwise, the whole thing will not work. वो जैसे स्वच्छता में भी वही है कि भाई अगर आप खुद ही नहीं करोगे तो कैसे होगा. So I think it's the same issue. Self is the main thing here. Dr. Prasad, lastly, I'd like to ask you a question about Japigo. It's been, you've been basically working on strengthening the health system. And since our health systems need support now more than ever, how do you think startups like Chakra can play a role doing this? Thank you. Thank you, Ajayji. Yes, you see, one of the most important things, was a lockdown. And the rationale given for the lockdown was that was going to be the time when we'll be strengthening our responses and we'll be strengthening health systems there. And there's been a lot of, viewpoints about whether we were able to do it or we have not done it. But health systems strengthening is an ongoing, issue. And as we said, COVID has really given us this impetus to see how best we can, strengthen it, how best we can think around, innovate, and come up with various different ways of doing the things that we've been doing, till now, and doing things differently. And that's where, startups can come in, simply because, startups probably can, here what we need is, quick reaction time. We need also probably numbers, depending on, what we are talking about. And we need something that would happen, would be contextualized to the problem. So while big business houses are also vying for this space, I believe that startups, definitely have that opportunity to be nimble, to be agile, to be able to, think differently, think out of the box. And I think that's where, their space is. And I'm sure, because it's a time to think differently, it's a time to think brave, to boldly. I think that's where, they'll definitely have a space. Thank you. I think we've had an exhilarating discussion today. And, what we have fundamentally learned is that, there have been a lot of issues due to COVID, but it has also created new opportunities. And it has also created new models where people have gotten together to work with industry, working together with academia, research, education, and everybody coming together to solve problems of the country. And that too, in an accelerated manner. And I think I'd leave it here for the next talk, where I would hand it over to Bharti. But I do know that Dr. Anita Gupta has been very deeply involved in working in this area and is definitely helping a lot of startups to create very, very innovative solutions.
Bharti. We can't hear you, Bharti. Am I audible now? Yes, yes. Okay, I'm really sorry. There was a technical glitch. So thank you so much, Mr. Chaudhary, for moderating the panel, and thank you so much to all the panelists for joining us. For our next speaker, we have Dr. Anita Gupta. She is the head of entrepreneurship and innovation at Department of Science and Technology, is a scientist G, and has been spearheading a lot of the innovative initiatives during the COVID-19 period. So I'm going to request Dr. Anita Gupta ma'am to please give her remarks for this topic. Yeah. So good afternoon, everyone. I think my voice quality is pretty audible to all of you. Yes, yes, yes. Very clear. Yeah. So let me first of all take the opportunity of congratulating Chakra Innovations, who have come with a decontamination unit, DeCoV. It's very much needed. And I've gone through how the minister spoke about the world has changed after, ever since the COVID struck the whole world. And the way new, you can say, problems have been posed due to COVID, the new opportunities which have been created, the kind of solutions which have come in a very fast pace in an accelerated mode. And we see new role models being created out of startups, and this is such an heartening to note the way our startups have really geared up and delivered, and the entire innovation ecosystem have really come together. In last 100 days has been such a overwhelming experience for all of us, and I'm so proud to be associated with the entire ecosystem, and have been watching this closely for 2 decades now. So when we used to simply preach that entrepreneurs and innovators have to be really observant to look for the challenges, because when we started our journey in terms of DST has been pioneers as we talk of innovation, entrepreneurship culture within the technical, you can say, largely education community, or the higher HEIs, we call higher education institutions ecosystem. We were there since close to now more than around 3 decades. But there have been 2 turning points which I could really talk about. First was obviously we were in the very moderate pace of working till 2014. We actually were there 70 odd incubators, but to the size of country of India, that was a very insignificant number given the size of problems of 1.3 billion of peoples, and given the talent pool we have, the intellectual capability, the whole world knows the kind of talents India has, because not only India, the world has benefited out of our Indian talent. Wherever they have gone, whichever company they have been working with, they all have delivered and made us proud. So first movement was when PM bestowed a lot of confidence and thrust on our youth, on our intellectual capabilities, on our technological capabilities, and driven by their innovation, driven by the energy, it was no better time to launch the Startup India movement. And since 2016, it's no looking back. While DST was the pioneers, now we have been joined by 6-7 good leading departments who are playing a very critical role in fostering the innovation value chain across the country through variety of interventions, through variety of mechanisms, which has impacted the startup ecosystem to make it bigger and better. Every day we see the new positive changes which have emerged, and not only central government, state government have joined hands with us.
and out of 740 odd districts, if Startup India can make a dent in more than 570 districts, it itself speaks volume of the kind of work we all have done collectively. And fortunately, when we talk about startup ecosystem getting evolved, getting matured day by day, we have a greater role of the entire gamut of startup ecosystem. So greater role of mentors, greater role of investors, greater role of incubators as an institutional mechanism. So collectively, and obviously our beneficiaries or our brand ambassadors are startups, which carry the message across, which and very proud to say every year we have a new set of role models. So the spirit and the culture has actually reached nook and corner of the country. You talk of it's not only confined to some good metro pockets, it has percolated down to tier 2, tier 3 kind of cities, semi-urban areas, and we see a lot of innovations which are sprouting everywhere. Now, the second game-changing, you can say, instance has been the COVID. So although the whole world, can you think of any challenge which is as grave as COVID as of now? I think no one. The challenge which has impacted all the nations, all the governments, all the businesses, and any common man you talk about, all the governments, all are struck by the to a great extent by the COVID-19. And ever since when the WHO declared it as a pandemic, I think everyone has now the world has become so different now. No new world order is being created, and why I call it as a game-changing movement, because earlier we were insisting on how to collaborate. What Shelja talked about, academia, industry, government. This is a triple helix, which we have been talking about for decades. But this proved to be, I say, it's a eureka moment for the entire innovation ecosystem. More so for India, because in spite of having some of the ingredients, we were loosely coupled. Now is the time when we really need to connect the dots and create a very meaningful picture. And within 100 days, we have seen so many examples. You talk of IT Kanpur group with 2 or 3 really path-breaking kind of be it a sophisticated ventilator. Because if you need to fast-track journey of a startup from simple an idea to a market-ready products with all sort of validations put in place, all sort of you can say supply, be a part of global supply chain. It cannot be done. It's a really challenging task and uphill task for any startup founder or an innovator. But given if we are connected to right set of people at the right time, I think we can really fast track the entire journey. And we not only the IIT Kanpur group, I've seen the Pune group. The Pune group, I'm part of their 2 or 3 WhatsApp group. I'm amazed to see this group never sleeps at all. IT group I've seen. So see, when there is a clear sense of purpose, when there is a criticality of time, we have seen patriotism taken to next level. Earlier, see, only army people, defense personnel, people in uniform were actually were taken as a, you can say, brand ambassador of patriotism. But COVID has told us that patriotism can come in many forms. So when our PM called them as a corona warriors, be our healthcare frontline healthcare workers, or our, you can say, the municipal works who kept the hygiene and sanitation on during lockdown and is keeping, and the kind of, let's see, the mentors, the startups, the academicians, the ones, see, all across the board, we have seen the new set of corona warriors being created. And we are very proud to see the way India really took this challenge and has delivered and will be delivering. And as PM said, everyone, this is, if you see the data, the COVID patients are doubling every month. And it has been like
India has reached number 3 in terms of total COVID positive patients. But that doesn't stop it. Although when COVID struck, world was world came to halt. But there were certain set of people who were working around the clock. And for them, it was not business as usual, but business was totally unusual with a lot of positivity, because they had the sense of purpose to deliver. And when that kind of clarion call is there before any one of us, and I'm happy to see and listen to all the kind of panelists spoke about. So I see a lot of positivity around. Although we are amidst so much of uncertainty, we do not know when the vaccine will come, when the herd immunity will be reached, when the people will have the right set of antibodies to fight against this pandemic. New knowledge is being created. The science is still evolving behind the COVID, when it is droplet driven, surface or airborne, whether it's a kind of repurposed drugs, which is most effective, which works, because human body itself a machine, and the kind of responses, because it's all research driven, it's getting validated, but what works is really evolving day by day. We cannot really say this works, will be working for, even if the vaccine comes, will it be effective for one and all? Nobody can say. But even then, it doesn't stop us. We have to keep on working, and we have to look for newer ways of working, new normals, new situation. And now we have so much of challenges, so much of opportunities, as rightly pointed out by previous panelists and speakers. Like when we have a challenge, we have to fight the challenge with newer innovations. When we have innovations, we come out with new solutions. And when we have a new solutions, maybe how it is going to impact the environment, how it is the sustainability part, the ecological, the societal part, the humanitarian part, all these aspects have to be really thought. The kind of due diligence has to be done in a right manner, that we come out with a really effective solution for the planet Earth. And if masks and PPEs from zero to surplus, we have attained the in terms of quantum of supplies from our side, from the domestic, the indigenous, it's a very proud moment. At the same time, because people in India are not really compliant to various norms in the hygiene, and although I am happy, the positive part as echoed by previous panelists, that now every sensible citizen, how small they may be in terms of social strata, they are so much sensitized about the whole disease. I also get a new knowledge from my maid who is working, because they are so abreast with the latest what is happening around. Everybody has become so much informed. So that's a really positive side, that how every common citizen is so much has got so much knowledge, whatever is at disposal, and they are trying to gain new knowledge. And just wanted to highlight how DST, not only for all the R&D activities, right from research to supporting startups, to supporting mature companies through technology development board. So we have an entire gamut of support programs for supporting variety of innovations from R&D to market. But at the same time, we also do see value how science could be, you can say, a transformative for the entire society. And we have come out with a COVID Katha, a very multimedia kind of storytelling, which any school kid can get a knowledge about. There has to be no fear and apprehension about or myths about COVID. And it is currently in English and Hindi, now being in other languages, prominent languages being translated. So the DST has a plethora of offerings. If we don't change the society, don't empower the society, which is going to be the new agenda and mantra for being Atmanirbhar India, we need to empower our citizens in first place. Then only we can ask them to be Atmanirbhar. So empowering citizen going forward for because we have a new mission, 2 missions, being vocal about local and also being a self-reliant or Atmanirbhar India.
So now I think we don't have even time to look for. We have to really we start working on all these new agendas, as there's a criticality of time, and there's no better time than this one to show our collective strength, collective mettle, and at the same time do the course correction, whatever, because it has really given us a time, because certain things we were taking for granted. Now, after COVID, we cannot take things for granted. We have to really be, you can say, proactive in whatever our preparedness. Everything has to be really proactive, because if we prepare the systems, if we prepare our citizens well to fight the COVID, we can fight any sort of challenge. And that will give a huge confidence to all citizens and to country as a whole, to all those who are involved. So let us take our patriotism to a new definition, to new level, and let us all gear up to fight the fight to COVID, which we have been doing in a most positive manner, in a very collective manner. Everyone has gone extra mile and really not work but overworked day in and day out. To anyone in the ecosystem I talk about, everyone since I think last 100 days has been overworking and trying to do their bit in every possible way, and let that spirit we carry forward. Although it's said that this year is a sort of a washout economically, financially, but let us take this time to rebuild India, and with a new force, new vigor, new passion, and new energy. I think we have a best time. All say that it's a worst time. Let us take this worst time to create the best time of India and be a role model for the entire world. So thank you all for inviting me and giving me an opportunity to share my thoughts. And we really need new role models like Chakra. We really need industry mentors like Ajay Chaudhary, Mr. Saurabh Srivastav. We really need ministers to bless the innovators, startups, and we really need industry to connect with the startups at the right time to mentor them, guide them, because all really need that sort of help to hit the market at the right time. So thank you. My best wishes to the entire set of people who have been behind the whole show so far, because even then, in spite of challenge, the show must go on with full vigor and full passion. Thank you. Thank you so much, ma'am. It was a truly inspiring speech by you. And we promise to keep up the spirit and ensure that we are able to deliver what we've decided to. So now we are almost towards the end of the webinar. We are going to end this with a short presentation about the product to share a little bit more detail and our vote of thanks. So we will just start sharing the presentation to share a little bit more about what made us decide to pick this technology, what made us build this product, and what are the key features. So, So I'm going to start with first explaining the name of the product. So we're calling it Chakr DeCoV, decontaminating the coronavirus. And I'm going to now share what are the things that inspired us to build this product. So as all of us have already seen that, N95 masks is something that is extremely important to fight the coronavirus and this pandemic. And with the rise in the number of cases, we saw that there was a huge shortage of these masks to begin with. And then when we ramped up our supplies, we ramped up the availability of these masks, we see that the waste which is being generated from these masks is becoming another big issue. There is still a global shortage of the material for N95 masks. And we are seeing that day by day, the waste which is being generated from due to COVID, and where we have gone into this habit of single use again,
is creating a lot of issues that could be a potential infection risk, because all of this waste is actually going to be laden with the coronavirus, and there is a chance that the virus will remain and it can lead to further spread of the disease. At the same time, it is also resulting in an environmental risk. Next slide, please. So looking at all of this, this was almost 3 months ago. We were trying to figure out what is it that the product should be able to do such that it is actually able to enable reuse of the N95 masks. And we looked at various things that we felt were needed, both from examples from the guidelines issued by our own Ministry of Health and Family Welfare, as well as from the US FDA. And we identified these 5 things which must be there in a product if we want to reuse the N95 masks. First of all, it should have a virucidal and bactericidal effect. Virucidal, again, it should be greater than 6 log virucidal and greater than 6 log bactericidal effect. There should be material compatibility, which means that when a material is treated with the system, the filtration and the fit for the mask should not go away. It should follow all the safety standards, should have completed the PFMEA and DFMEA as per ISO 14971. It should be reliable and it should be traceable. Each cycle should be able to go back and tell us which mask went into which system. And it should be easy to use. So keeping these 5 things in mind, we started looking at what are the things that are there already, and are we reinventing the wheel, or is there really something that we can do? And as you all know, there are various methods to kill a virus. There is UV light. There is obviously the simple method of just keeping it in a room for 4 days. And there are some complicated technologies like vaporized hydrogen peroxide, H2O2, etc., that are available. And we felt that in all of these methods, there were certain drawbacks that we had to meet. Hence, we came up with this product, the Chakr DeCoV. Next slide. So we wanted to make sure that all of these things are addressed. So the technology that we have, as we shared, is able to achieve a 6 log reduction in the bacterial bioburden as well as the viral load. It has been tested both at ICMR NID for successful inactivation of the SARS-CoV-2, which is the coronavirus, as well as at IIT Delhi for, again, 99.9999% reduction in the bacterial bioburden. It's a gas-based cycle, which means that the disinfecting agent, which is the gas, spreads very easily through the product. It is able to go into the pores of an N95 mask because, as you know, the virus actually gets trapped within the pores, which is something that a normal UVC light will not be able to do because that only works with a line of sight mechanism. It's a patent pending technology. We've already filed 2 patents for this. There is a completely automated and safety assured system that this product runs with. We are also using a very high level of SOPs to ensure that while the product works, the process should also work. So we are using a chemical indicator based safety and traceability system to ensure that the reliability of the product is 100%. And we've ensured that while we use this product, it is optimized such that the virus and the bacteria get killed, but the material of the mask is not impacted. The filtration efficiency and the fit of the mask is retained, and that has also been tested at Citra. So we've already done multiple pilots for this product. We have been working very closely with Sahyadri hospitals in Pune, who were involved from the very beginning of the genesis of the product, helping us do all the tests. We've gotten it tested, as I shared, at ICMR NID, at IIT Delhi, and with Citra. So we would also just like to share a comparison with other technology options that we had evaluated, and we tried to rate it across various parameters that would matter to a product like this. So first of all, and the first and foremost, is obviously 6 log reduction for virus. The second is the ability to decontaminate within pores and blind corners. The third is obviously decontamination time. The fourth, fifth one is that it should have a 360-degree exposure and should be able to completely eliminate whatever bacterial bioburden is there. It should be safe, it should be traceable, and the material should be compatible. So across all of these parameters, as you can see, we've managed to optimize it and reach to a level where we are able to fare well across all parameters and are also reasonably priced. So while our capex
falls in the medium, higher than the typical UVC-based sanitization systems. This capex is not as high as is not at all high because we are able to actually achieve the ROI for this within 15 to 20 days. So what that means is that if a hospital installs this product, the cost for this product can get recovered within 15 to 20 days because they will actually be able to save their resources on the single-use N95 masks. So just to share the numbers with you, so for example, if we were to install an equipment like this, the cost of decontamination per mask, which includes the capex and the opex, is just 7 rupees. So you typically would find an N95 mask product for about 150 to 200 rupees in the market, or now even 100 rupees. But if we decontaminate it, we can decontaminate it at 7 rupees per mask and reuse it for at least 10 times. And hence we can obtain the ROI on the capex for this within 15 to 20 days. At the same time, it also has a huge environmental benefit. Per day, we can save pollution from 450 masks from one equipment, which is equivalent to actually running 2 cars. So you get to save emissions equivalent to stopping 2 cars from running. We've followed all the principles of safety and quality to ensure that the system is reliable, it works, there is no hazard of ozone leakage or any kind of risk which could come with a product like this. So this is where we are on the product and what we've built. Now I'm going to end our presentation with a vote of thanks. And I'm going to start with thanking all the panelists who've joined us. So first of all, I would like to thank Dr. Shailja Gupta for being here with us, Dr. Prasad from Japaigo, Mr. Pavan Chaudhary, Mr. Dilip Chinoy, Dr. Arunabha Ghosh, unfortunately had to leave, but again, thank you to him virtually. And lastly to Dr. Anita Gupta for being here. I would obviously like to thank our investors, board members, and advisors who've been with us in this journey for the last 3 years. So just to share with all of you, we actually had a rhythm where we used to do daily 6 to 7 p.m. calls, and we were extremely fortunate to have all of our investors take out that kind of time for us and give us this guidance and advice. So at the same time, I would also like to thank our professors from IIT Delhi, Professor Sudipto Mukherjee and Dr. Neetu Singh, who again were guiding us and mentoring us on this. I would also like to thank our former professor again from IIT Delhi, Dr. Sanat Mohanty, who is currently in the US and who again was guiding us and mentoring us. We had immense support from FITT, which is the IIT Delhi incubator, as well as from National Chemical Laboratories, NCL, for our technology development. With this, I also want to announce that we have a distribution partner, Emil, that has been with us firstly to understand the market needs, and now are going to help us serve across the country. Being a startup, we obviously don't have presence throughout India, but we've been working very closely with Emil. They have sales and service presence across more than 15 states in India. Their team is headed by a doctor herself, Dr. Malika Kapoor, and they will be our partners for distribution of this product as well as for the sales and service going forward. And in the end, I would like to thank our donors who have given us the opportunity to actually build this product, which is quite rare in times of Corona, where it's obviously been extremely hard to manage cash flows. But with the help from the donors, Antex Corporation, Coal India, ICICI Bank, Manganese Ore India Limited, Mineral Exploration Corporation Limited, NALCO, and NLCIL, we've actually been able to do the R&D for this product, build the pilot units, deploy the pilot units, and get the learnings. And now we have reached a stage where we are ready to launch this product commercially. And last but not the least, the team at Chakr, who have been working relentlessly day and night for the last 3 months, or actually for the last 4 years. And I would like to just add here that apart from the team and the engineers and the sales team that you see on the screen, there have been our workers who, even during Corona in Pune, which was heavily impacted, decided to still contribute to this site.
So they've been very, very closely working, staying at the plant and helping us deliver this product. And we've been able to build it and get it to a stage where we can launch it, all thanks to the team at Chakr. So this is where we sort of end our webinar and product launch. We are going to now just share a short video, which we are going to release very soon on the social media as well, but we would like to share it with all of you. Just play that video before we end. The global unrest due to COVID-19 outbreak has alarmed everyone. As the world is fighting an unprecedented battle against the COVID-19 pandemic, the healthcare workers are fighting a dual battle against the virus. In this state, health workers all over the world have become the frontline warriors, risking their lives to save millions. But are they well equipped to fight this battle? PPEs, especially N95 masks, are a precious resource for our warriors, and it is crucial that everyone in health and social care has access to the right protective equipment. The requirement of such huge quantities is forcing people to use masks of substandard quality, which fail to provide the desired protection. This is also resulting in generation of huge amounts of hazardous biomedical waste, which is an additional infection and environmental risk. To solve this problem, Chakr Innovation has developed an innovative ozone-based decontamination system which can provide quick disinfection of N95 masks. In this system, the N95 masks are loaded onto an engineered tray which is inserted into the decontamination chamber. Negative pressure is created in the chamber for safety and effectiveness. Ozone gas is generated and pumped through the masks, allowing for complete and uniform treatment. After the treatment cycle is complete, the masks and the chamber go through a catalytic reduction and aeration process ensures that the system is safe to be opened. The chamber is designed for utmost safety with negative pressure system to avoid leakage of gas and a fail-safe automation system which ensures that all the process parameters are met before allowing for reuse. Once the reduction cycle is complete, the door is unlocked and the masks are ready for safe use. Once treated in the system, these masks can be safely used for up to 10 times. The slight negative pressure maintained in the system enables high penetration of disinfection agent in a hassle-free manner and requires zero consumable cycles. The innovation also ensures that there is no damage to the mask material or filtration efficiency, which has been tested by CIFRA for reuse up to 10 times. COVID Shield is a patent-pending novel technology which inactivates the SARS-CoV-2 virus as tested by ICMR NI. The COVID-19 problems that the world faces today have never been seen before. There is a need to innovate and find solutions for reuse of N95 masks and PPEs. We have tested the technology developed by Chakr Innovation and observed a 6-log reduction in the bacterial viral burden in case of E. coli and SRS. So that brings us to the end of this event. I would once again like to thank our Honorable Minister of State for joining us, our keynote speaker, Dr. Vikas Mahatme, Director Sir IIT Delhi, who graced us with his presence, to all the panel members, to Mr. Ajay Chaudhary sir. Again, thank you to all our investors, mentors, and advisors who have held our hand, and we hope they will continue to do so in the future. And thank you so much to all the participants who joined and listened patiently, and also bear with our short notice.
so much. We do hope that we can keep bringing more such innovation and solutions to the problems that the world faces in the due course of time. So we will end this webinar here. The recording will be available and will be shared on our social media handles. So, thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. All the very best.